हजरात, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ SMHZ बैठक। जैसा कि हमने आपको बताया था कि आज हमारी इनॉग्रल अल्फा टेस्टिंग फॉर ए डिबेट नाइट एपिसोड लाइव जाएगी। और उसके लिए आज जैसा कि आपने थंबनेल देखा ही होगा, उस पर हमारे दो बड़े ख़ास मेहमान भी हैं। बिफोर आई गेट इनटू दैट, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं कि ये मकसद क्या है। कि जो हम एक सेगमेंट ऑफ सॉर्ट्स वेंसडेज को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, द आइडिया रियली इज़ कि हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि सुबह शाम हम एक्सपीरियंस करते हैं, उसके ऊपर डिबेट्स करते हैं इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर, ट्विटर के ऊपर, इंस्टाग्राम स्टोरीज़ के ऊपर। और उसमें जाहिर है कि लॉट ऑफ पीपल हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंट ओपिनियंस। लेकिन वो जो डिस्कशन होती है, जो कन्वर्सेशन होती है, वो कोई इतनी नुआंस्ड नहीं होती, क्योंकि हम अपनी फीलिंग्स ज़्यादातर बता रहे होते हैं, कोई उसके ऊपर एनालिटिकल ओपिनियंस नहीं होते। और जो हमारा टेलीविज़न है, अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर जो कॉन्वर्जेशंस हो रही हैं वो उसमें कुछ भी ऐसा कवर नहीं हो रहा। सो वी थॉट कि एक अच्छी स्पेस है जहाँ पर ऐसी चीज़ें जो कि हम आप जैसे नौजवान, मैं तो खैर नौजवानी से निकलता चला जा रहा हूँ, 33 का हो गया हूँ, बट आप जैसे नौजवान जो हैं, द थिंग्स दैट यू गाइस आर इंटरेस्टेड इन, यू नो, वी शुड बी स्पीकिंग अबाउट देम इन ए एजुकेटेड मैनर, जिसमें एक दूसरे के ऊपर चीख ना रहे हों, एक दूसरे को मार ना रहे हों, बल्कि उस तरीके से हम कॉन्वर्जेशन को आगे ले जाएं जिससे हमें कुछ सीखने को भी मिले, दिमाग थोड़ा ब्रॉडन हो। क्योंकि मेरा ज़ाती ख्याल ये, आई सिट इन द सेंटर। आई थिंक ब्लैक एंड वाइट कोई चीज़ नहीं होती, कोई एक ओपिनियन या एक साइड कभी भी सही नहीं होती। सच हमेशा कहीं दरमियान में होता है। उसको उस तक पहुंचने के लिए आपको दोनों साइड्स को सुनना बड़ा ज़रूरी होता है। आज जो हमने टॉपिक चूज़ किया है, अगेन इट इज़ समथिंग जो कि बहुत सीरियस चीज़ है। जो इज़राइल वॉर कर रहा है इस वक्त पैलेस्टाइन के ऊपर, उसकी वजह से पूरी दुनिया में मुसलमान खड़े हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ आउटरीच, अ लॉट ऑफ पीपल आर स्पीकिंग अबाउट इट। द अपसाइड इज़ कि फॉर द फर्स्ट टाइम एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि दिस माइट फ्लिप। वरना ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा, ये हम थ्रू आउट हिस्ट्री देखते आए हैं, थ्रू आउट आवर लिविंग मेमोरी हम ये देखते आए हैं। यार थोड़ी सी बात होता है, थोड़ा सा आउटरीच होता है, एंड देन इट डाइज आउट। बट इन द इंटरनेट एज, जब मीडिया को उस तरह से कंट्रोल नहीं किया जा सकता, तो जैसा कि हमने पिछले भी बहुत सारी एपिसोड्स में डिस्कस किया कि इट सीम्स लाइक ए ग्लोबल ऑर्डर शिफ्ट हो रहा है, और पर्टिकुलरली द वे दैट इंफॉर्मेशन इज फ्लोइंग, तो उसमें एक एवोल्यूशन ऑफ सॉर्ट्स आ रही है, जिसकी वजह से इस बार एग्रेशन भी ज़्यादा है, बिकॉज वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ कंटेंट, लॉट ऑफ वेरी ग्रूसम एंड रियल कंटेंट कमिंग आउट, जो कि विच इज ड्राइविंग अ लॉट ऑफ इमोशंस, but also because the collective voice of the Muslim world, but not just the Muslim world, the collective voice of the global South is getting difficult कि आप उसको कंट्रोल कर सकें। अब उसमें जाहिर है कि पाकिस्तान में जब ये सारा सेंटिमेंट है, और इस वक्त जाहिर है लॉट ऑफ पीपल फील हेल्पलेस, और वो परेशान भी हैं, वो डिप्रेस्ड भी हैं। तो उसमें अ लॉट ऑफ पीपल आर वांटिंग कि जो पर्टिकुलरली थॉट लीडर्स हैं ऑन सोशल मीडिया, जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो इस चीज़ के बारे में बात करें। और ये सिर्फ इस कॉन्फ्लिक्ट में नहीं हो रहा, ये जनरली हम देखते हैं कि जब भी एक आउटरेजियस या मेजर चीज़ होती है, तो पीपल डू पुश इन्फ्लुएंसर्स कि उनको भी आके बात करना चाहिए। अब इसमें ज़ाहिर है विद इन दैट कम्युनिटी एक कॉन्वर्जेशन स्टार्ट हो चुकी हुई है, जिसमें इन्फ्लुएंसर्स आर सेइंग कि लिसन, यू कांट फोर्स अस टू स्पीक अबाउट एवरीथिंग। लेकिन ऑब्वियसली लोग ये कह रहे हैं कि यार एवरीथिंग नहीं, ये बहुत एक सीरियस मामला है, और ये बहुत मेजर मामला है, एंड यू शुड बी स्पीकिंग अबाउट इट। तो उसके लिए आई वांटेड टू हैव अ कि हम थोड़ा सा इसको डिकंस्ट्रक्ट करें, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें कि ये क्या थॉट है, और इसमें व्हाट आर द डिफरेंट ओपिनियंस आउट देयर, जिसके लिए आज हमारे साथ दो बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। वी गॉट खयाम साजिद, द होस्ट ऑफ द ऑल ओवर द प्लेस पॉडकास्ट। He's a content creator as well, content producer, and has been in the industry for almost 3 years. और उसके बाद हमारे साथ यूसरा मुर्तज़ा मौजूद हैं, who most recently was a senior content associate at Wali. She's been managing influencers. She has a very in-depth insight on the influencer and content industry. Guys, thank you so much for being part of the show. Thank you so much for having me. Thank you so much for having me. थोड़ा सा before we start, for the viewers who are watching, I just want to make sure कि आपको ये बात पता हो कि this is an alpha test, जिसके अंदर हम ये conversation तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसके अंदर हम अपनी टेक्नोलॉजी भी टेस्ट कर रहे हैं, हम ये भी टेस्ट कर रहे हैं कैपेबिलिटी हमारी कैसी है, और obviously none of us are experts here, neither the moderator nor the guests. तो वो जो है, अगर कोई बात आपको
दिल आज़ारी हो जाए किसी बात पे तो बराह करम हमें कमेंट सेक्शन में आके बता दें. वी डोंट मीन to say anything that might, again, it is a sensitive topic and it is a sensitive time, and I think all of us are very understanding of that fact. I'm going to start this conversation with Khayyam. थोड़ा सा अगर आप मुझे एक्सप्लेन कर सकें कि रिसेंटली हुआ क्या है इन्फ्लुएंसर साइड के ऊपर, बिकॉज आई एम सीइंग अ लॉट ऑन इंस्टाग्राम पर्टिकुलरली. हमजा भट्टी की स्टोरी आई हुई थी. ही वाज अपसेट बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल वर asking him to speak up, but obviously उसमें फिर बहुत सारे लोग गालियां भी दे रहे हैं, बहुत सारे लोग वो भी हो रहे हैं. एज अ कंटेंट क्रिएटर जब आपको एकदम से ये बैकलैश आता है तो हाउ डज इट फील, and what's really going on here, if you can give us some. Thank you so much for having me. जो आपने जो अभी सारी सिचुएशन बताई है ये ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा सीरियस है और इसके अंदर आपको थोड़ा सा ना बहुत ज़्यादा इमोशंस इन्वॉल्व है असल में. अगर आप स्टोरीज पर जाते हैं, आप बहुत से लोग एग्रेसिवली ये जो जिसने आपने मेंशन किया कि लोग गालियां दे रही हैं और इन्फ्लुएंसर्स ने पोस्ट भी किया स्टोरीज के ऊपर, अब ये समझना पड़ेगा. अगेन खैर सबसे पहले मैं जूम आउट करता हूँ, मैं दोनों साइड्स को बताता हूँ. अगर आप दोनों साइड्स देखें, पहले आप देखें इन्फ्लुएंसर साइड देखें या कंटेंट क्रिएटर साइड देखें, वो लोग हैं जो कि सही बात कह रहे हैं कि प्रेशराइज नहीं किया जा सकता और आप प्रेशराइज ना करें, क्योंकि हमने पास में देखा है कि ऐसे बहुत बार हुए कि कोई फॉर एग्जांपल कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर अगर अरेस्ट हो रहा है तो उसके ऊपर भी बोला जा रहा है कि आप लोग बोलें, और कोई भी कोई रिलीजियस पार्टी की कोई बात है तो हर चीज़ पे बोला जा रहा है, पोक किया जा रहा है कि आप बोलें, जो कि गलत बात है. मतलब कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर आपकी कुछ लिमिट्स होती हैं, जहाँ पर आपको पता है कि आप जब बोलेंगे तो क्या आप बैकलैश मिलेगा, या कुछ सर्टेन लिमिट्स होती है ना, लिमिट्स में रहना पड़ता है. बट कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है ना जहाँ पर बड़ी ऑब्जेक्टिव चीज़ होती है, ठीक है, ब्लैक और वाइट नजर आ रहा होता है. इस सिचुएशन में ना बहुत ब्लैक एंड वाइट चीज़ है, ठीक है. मैंने खुद भी काफ़ी क्रिएटर्स को पर्सनली मैसेज किया जिसको मैं नहीं कर सकता था, उनको मैंने किसी के थ्रू पूछवाया कि यार वो क्यों पोस्ट नहीं करे, जो फुल डेड है, जिनके इंस्टाग्राम पे कभी कोई पोस्ट अभी तक नहीं आई. तो अगेन उनका यही रिप्लाई था कि हमें प्रेशराइज ना किया जाए, आप हमसे क्यों पूछ रहे हो, जबकि आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि क्या मसला है. और यहाँ पर ना अगेन ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं ये भी जज्बाती जवाब दे रहे हैं कि हमें प्रेशराइज ना किया जाए, और जो ऑडियंस है वो भी जज्बाती काम कर रही है. अच्छा, ऑडियंस को समझने की क्या ज़रूरत है? अगर आप ऑडियंस के पर्सपेक्टिव अगर मैं बताऊं कि वो लोग कह रहे हैं आप पोस्ट क्यों नहीं कर रहे और वो गालियां दे रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं समझ आ रही कि बहुत से लोगों का जो इन्फ्लुएंसर्स हैं और क्रिएटर्स हैं उनका मतलब रोटी पानी यही है, जो इंस्टाग्राम है जिस पर स्टोरीज लगाते हैं, पोस्ट लगाते हैं. और लिटरली वो काजी अकबर ने एक स्टोरी लगाई थी और उनके 3 व्यूज आए थे. तो इस तरह बहुत से क्रिएटर्स हैं जिन्होंने बात की होगी, वर्ड यूज किया होगा, तो शैडो बैन हो गए होंगे और उनके व्यूज नहीं आएंगे, जो कि अगेन उनकी लाइक उस चीज को अफेक्ट करे जो कि उनका जहां से वो अर्न करते हैं. और अगर आप इसको अपनी जो ऑडियंस है वो अपने स्टैंड पॉइंट पे इस चीज को रखकर सोचे कि उसके घर के अंदर या उसके पास जो उसका सोर्स ऑफ अर्निंग है उसको अगर इफेक्ट हो तो उसके ऊपर उसके दिमाग में सेकंड थॉट जरूर रहेंगी. आई अंडरस्टैंड कि बहुत सीरियस मसला, और मैं बहुत जज्बाती हूँ, मैं आगे पीछे बहुत लोगों से बहस कर चुका हूँ कि वो बात करें और वो ज़रूरी है, बट उनका पर्सपेक्टिव समझना भी ज़रूरी है. बट अगेन ऑडियंस जज्बाती है, मेरे पास सर्टेन प्रिविलेज है, सब क्रिएटर्स के पास सर्टेन प्रिविलेज है, सर्टेन एक्सपोजर है जो कि हर बंदे ऑडियंस के ना, क्योंकि ऑडियंस को हमें ये समझने की जरूरत है एज अ क्रिएटर, एज अ इन्फ्लुएंसर के डिफरेंट सेगमेंट्स की ऑडियंस है आपके पास, ठीक है. कुछ लोग होंगे जो समझते हैं, जो कि शैडो बैन भी समझते हैं, जो कि आपका ये सोर्स ऑफ अर्निंग है, ये जो प्लेटफॉर्म है ये भी समझते हैं. लेकिन कुछ लोग हैं जिनको इसके बारे में वो आपसे प्यार करते हैं, वो कहते हैं कि यार हम इनको इसलिए पसंद करते हैं या क्योंकि ये वो बात करते हैं जो हमारे भी वैल्यू से अलाइन करती हैं, जो कि हमें फायदा देती हैं. तो उनकी ना वो इमोशंस अटैच है आपके साथ, वो जाते हैं, आप जब स्टोरी लगाते हैं, आप एक दिन पोस्ट करें ना कि मेरी तबीयत खराब है, लोग इतनी दुआएं भेजते हैं आपको ना, अनरियल लगता है कि यार इतने लोग अच्छे कैसे हो सकते हैं. तो जब इतने अच्छे इमोशंस आ रहे हैं तो फिर उतने बुरे इमोशंस भी आते हैं जब आप वो चीज नहीं करते जो चीज उनको लगता है करनी चाहिए, और ये इमोशंस की वजह से. It's like if I were to ask you, and I want Usra to probably answer this, but देखिए मैं आपको एक अपना पर्सनल एग्जांपल देता हूँ. मैं PIA का क्रैश हुआ था इन कराची, अगर आपको याद हो, एक उस पे रेजिडेंशियल एरिया के ऊपर हुआ था. ईद से बिल्कुल पहले. और जब वो हुआ ना तो I turned the TV on. Somebody messaged me कि there's been a PIA crash, and I turned the TV on, and
the images were appalling, right? Like there's a plane that's crashed into a residential area, and I can't even imagine the impact that would have happened. And for the next 24 hours, I was literally like, I was shocked and I was dumbfounded कि मैं क्या बोलूँ ना, like anything, saying anything felt like not enough, because there were people, and a lot of people knew those people who were on the plane and who had passed away. And in the, so काफी दफा influencers are inherently also humans, right? So Yes. in a lot of ways ये थोड़ा सा उनको रोबोट्स की तरह बना दिया कि यार आपने बस ये करना है तो आप बस रोबोट की तरह जाके वो कर दें. अगर आप बहुत ऑनेस्ट हैं अपने काम के साथ, तो जिस तरह मेरा ये मसला था कि मैंने उसके बारे में कुछ भी नहीं बोला, और बड़े लोगों ने मुझे जिस टाइम बोला आपने क्यों नहीं बोला, मेरा मसला ये था कि I genuinely did not have words to say. It's not like I didn't feel anything about it. काफी दफा ये भी हो रहा है कि इस टाइम के ऊपर a lot of influencers are not finding the words. They feel like maybe the words are meaningless. कि जो in front of what we're seeing, it's just बहुत फर्क है, right? So in a lot of ways we do tend to dehumanize the content creators as well. What do you think? Me? You're asking? Yusra. I think, Muzamil bhai, it's the same, like, you know, this conversation again, like, you know, happening again and again. Like, जब भी कोई भी मसला होता है, ये conversation दोबारा से आ जाती है, like, why content creators are not talking about it, or like, you know, people associate, like, you know, कि उनके साथ एक, क्योंकि वो public figure हैं, they have a certain following, they should be talking about it or not. ये हर बार होता है, हमेशा ये conversation घूम के आ जाती है. And this time, like you said, I just feel like कि people tend to forget, like, because everybody, like, जिस तरह से ये सारी incident हुआ, and everybody got like really like in a way, like they didn't know how to react to it or whatever. जिस तरह आप बात कर रहे थे कि समझ ही नहीं आ रहा था कि अल्फाज क्या हैं कहने के लिए, right? And then you're opening your social media all over the, like, you know, कोई वीडियो आ रही है, सारी चीजें आनी है, आपको नहीं समझ में आ रहा. So like as like, you know, हम भी as a इंसान, like for example जो content creator है वो इंसान है, और अगर वो भी अपना Instagram एक normal इंसान की तरह खोल रहा है, तो उसको भी उसी उतना ही ज्यादा शॉक लग रहा है कि यार मतलब ये क्या हो रहा है, and how come we have come to this point कि जहाँ पे दुनिया में like what kind of world that we are living in, right? And then उसमें ये होता है कि फिर like if I look at my so फ्रेंड्स ग्रुप, तो उसमें यही होता था कि यार हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या बात करें, कैसे बात करें, लाइक क्या बात करें, लेकिन हमें कुछ ना कुछ शेयर करना चाहिए. लेकिन अनदर क्वेश्चन वुड बी लाइक यार जस्ट शेयरिंग like वो graphical posts या all of that, is it enough or not, how to go about it, like I don't know what part I can play or not. So definitely there is a dehumanization वाला जो angle है वो होता है कि people tend to forget, like आप अपनी जगह पे बैठे हुए हो, आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पे जाके ये कह सकते हो कि अगला बंदा जो है वो क्यों नहीं बात कर रहा, बट आप ये नहीं सोच रहे कि आप भी उतना ज्यादा ही इम्पैक्टेड हो और आपको लग रहा है कि मैं बात नहीं कर पाता, इसलिए आप और ज्यादा एंग्री हो कि कोई और क्यों नहीं बात कर पा रहा है इस बारे में. Right, we all are at the end of the day human and we don't know how to process emotions, right? जब भी कोई चीज इस तरह की होती है तो the first reaction for any human is like I don't know how to go about it, like what are the right words. Even like in family, in friends, whenever somebody dies, you don't know how to console that person. It's very easy to say like I'm sorry, but वो words भी बहुत मुश्किल से आते हैं क्योंकि आपको नहीं समझ में आ रही होती कि कहना क्या चाहिए था उस बंदे को, like how to go about it. तो एज अ नॉर्मल पर्सन, लाइक आपको नहीं समझ में आएगा कि आपने क्या करना है. फिर इसी तरीके से हुआ इन्फ्लुएंसर्स के साथ भी कि कुछ इन्फ्लुएंसर्स वर नॉट टॉकिंग अबाउट इट बिकॉज दे डिडंट नो हाउ टू टॉक अबाउट इट. बट देन अगेन व्हेन दे स्टार्टेड नोइंग लाइक यू नो कि शेयरिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, दे देन स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट. व्हेन दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट दे गॉट शैडो बैंड, राइट? बिकॉज अब उनकी, और जब वो शैडो बैन हुए तो अब वही वाली बात है, लाइक खयाम सेड दैट इट्स डायरेक्टली इन proportional to their risk, right? Now उनका प्लेटफॉर्म वही है, उधर ही उन्होंने काम करना है, उधर ही उन्होंने स्टोरीज लगानी है. आई रिमेम्बर लाइक यू नो few पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स जो कि बाहर होते हैं, like they had to talk about certain brands and then they came forward like said कि हम नहीं कर सकते because it's not even right to the brand right now because our stories are so like story के numbers इतने ज़्यादा drop हुए हैं, हम नहीं बात कर सकते, लेकिन हम क्या करें, and they're doing it in their own capacity. And then again I feel like कि अब इतना ज़्यादा हो गया था कि फिर लोगों का एक वो वाला point आ गया था as an influencer, I would say लोगों का, because it's not even about influencer versus somebody who's not an influencer. It's about all of us as human seeing such atrocity happening right now, and then we were silent in the start because we didn't know कि क्या कहना है.
then we got the hang of it कि like ये हो रहा है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ फैलानी चाहिए, even though knowing कि ये उसी सर्कल में जा रहा है जिस सर्कल में हम हैं. Like me, my friends, the creators I follow, we are all sharing the same post and it's revolving in the same and it's not even going to the like जिनको पहुंचना चाहिए वो वहां पे नहीं पहुंच रहा. And then to the point like इतना ज़्यादा हो गया, and obviously it's been happening for so long, over 2 weeks, that it's like अब क्या करें, अब क्या किया जा सकता है. Like we've raised our voices, we have used our platform, we do not even have any reach right now. What do you want us to do? Like I've seen so many creators use such like creative ways to talk about it. Like there's like an influencer living in Texas, she started using like red nail paint लगाया था उन्होंने, and then she started giving these clues with red colors, black colors and all of that, so that she shouldn't use the word और वो सारी चीजें. So it's like everybody is doing everything they can. It's just that ये इसी तरह का वक्त होता है जो कि आपको और ज्यादा एहसास करना चाहिए कि we all are human at the end of the day. Like it's not about somebody having like the following और नहीं Makes है या sense. उसको बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए. Makes sense. But again, Khayyam, there are two sorts of creators right now. There are those जो कि essentially इस खामोश हुए में पीछे हुए में वो कह रहे हैं कि यार अच्छा अगर मुझे समझ नहीं आ रही मैंने कैसे बात करनी तो मुझे किसी भी चीज़ के बारे में समझ नहीं आ रही. But then there are people जो कि जिनकी ordinary ज़िंदगी चल रही है, right? So the stories are coming, the posts are coming, and for a lot of people what they're saying is okay, it's fine if you're not posting, that's your prerogative, shadow ban का मसला होगा ये होगा वो होगा, but now you know that the population is mourning essentially, right? और इस टाइम के ऊपर शायद maybe you can be a bit more sensitive with your content. You can be थोड़ा सा बैक सीट ले लें इस टाइम के ऊपर. चले आप ये तो हम मान लेते हैं कि if someone is not talking because they don't know what to say or they're unable to process it properly, and which is a very real thing. तो but then रेगुलर लाइफ आपकी कैसे चल रही है, देयर इज दैट सॉर्ट ऑफ एक दरमियान में ये भी है और उसकी वजह से फिर लोगों का बैकलैश भी आ रहा है. एक तो ये चीज आई वांट यू टू एड्रेस दैट, एंड सेकंड बिकॉज नॉर्मली जब इस किस्म के मोमेंट्स होते हैं ना तो होता क्या है कि वे कलेक्टिव ट्रॉमा चल रहा है माशरे का, एंड सो जो पब्लिक है वो एकदम से बैकलैश देती है और फिर बैकलैश के बाद क्रिएटर्स जो हैं वो एग्रेसिव तरीके से वापस आते हैं, राइट. वी हैव सीन जुनैद भाई के साथ हुआ था, उन्होंने he gave a statement, people were very upset and he came out very gracefully. He said I understand कि sentiments different हैं, or maybe I should not have said something like this at this time and I do apologize. So he was able to really do it in a way which understood and validated the emotions of the public as well. But then there are a lot of creators जो कि inherently gaslight कर रहे हैं अपनी public को. What are your thoughts on that? So पहले युसरा ने कहा कि और आपने भी कहा कि जो लाइक ऑब्वियसली ट्रॉमा रिस्पॉन्स भी होता है ना, हर बंदे का डिफरेंट होता है. कुछ लोगों के लिए होती है बड़ी चीज, हर बंदे के लिए होती है, लेकिन रिस्पॉन्स डिफरेंट होता है. मेरे लिए भी जब मैंने पहले देखी है, अभी तक मैक्सिमम 2 से 3 वीडियोस मैंने देखी होंगी, 3 से ज्यादा वीडियोस मैंने नहीं देखी, मैं स्किप कर देता हूँ. बट आई एम गोइंग ऑन आर्टिकल्स, आई एम गोइंग वॉचिंग वीडियोस, यूट्यूब वीडियोस, टॉकिंग सर्चिंग कि यार ये क्या हो रहा है, इसके ऊपर क्या, सब चीजों के बारे में. क्योंकि इतना कुछ हो रहा है ना, तो अब आप आंखें बंद नहीं कर सकते, ठीक है. आपको पता है कि क्या कुछ हो रहा है, आप इंस्टाग्राम डिलीट कर दो, ट्विटर डिलीट कर दो, अंडरस्टैंडेबल है, ट्रॉमा रिस्पॉन्स होता है, आप बोलोगे यार देखना ही नहीं है. बट पता तो चल रहा है ना, इर्द गिर्द लोग बातें तो करने, आपका कोई जानने वाला होगा, कोई दोस्त होगा आपका, तो आपको पता चल रहा है, ग्रुप्स के अंदर आ रहा है कि यार ये चीज हो रही है, तो आप क्या करोगे, आप जाके सर्च कर लोगे, ठीक है. और जो लोग, जिन लोगों ने कोई भी बात नहीं की, और अगेन आप लोगों ने कहा कि समझ नहीं आ रही, लफ्ज खत्म हो गए हैं. आई वुड से कि लफ्ज खत्म हो जाते हैं, मतलब 1 दिन 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, अब 5वें 6वें दिन जब वो हॉस्पिटल वाला अटैक हुआ था, उसके बाद आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीवन कि एक ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि वो उसको कम समझना और अंडरस्टैंड करना कि क्या हुआ है, इट्स ओके. लेकिन इतनी बड़ी चीज हुई है, अपनी अपनी ऑडियंस को बता रहे हैं कि शैडो बैन हुआ ना, इसका मतलब है कि नॉर्मल जिंदा तक किसी को कुछ पता नहीं चला अभी तक, तो आपकी जिम्मेदारी है ये कि उनको बताना कि क्या हुआ है. और जब ये पूछा जाए कि आप लोग क्यों नहीं शेयर करें, तो अगेन यही रिस्पॉन्स होता है कि हमें प्रेशराइज ना किया जाए. तो आई थिंक कि इतना टाइम मिल गया है हर बंदे को, और अगेन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये कोई पर्सनल और प्रोफेशनल टाइप की चीज़ नहीं है, और ये कोई सब्जेक्टिव चीज़ नहीं है, बड़ी ब्लैक एंड वाइट चीज़ है. आपको पता है दुनिया में क्या हो रहा है, शैडो बैन हो रहे हैं. हम लोग ही, मैं प्रोटेस्ट पे गया हूँ, मर के 100-200 लोग थे, क्योंकि वहाँ पर मैं लोगों से पूछा गया, लोग लाइक आप जो लोग आए हुए थे, बहुत से लोगों ने बोला कि हम आपकी स्टोरीज देख के आए, लोग मेरे से मिलने के लिए आए कि आपसे की स्टोरीज देख के आए हैं. और इतने लोग नहीं आए हुए थे क्योंकि लोगों तक पहुंचा ही नहीं है.
मुझे भी बिल्कुल आखिरी दिन जिस दिन प्रोटेस्ट था उसकी रात को जाकर नजर आया, तो मैंने स्टोरी पे लगाया और मैं सुबह गया। तो अवेयरनेस की बहुत सख्त जरूरत है। अच्छा, आपने बात की थी कि जो ऑडियंस का बहुत एग्रेसिव वो आ रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है, और क्रिएटर्स भी वापस, इन्फ्लुएंसर्स वापस एग्रेसिवली रिप्लाई कर रहे हैं। आपने जुनैद भाई की बात मेंशन की, अगेन पुराने खिलाड़ी हैं, अच्छी तरीके से उन्होंने रिप्लाई किया जिस तरह उनको करना चाहिए। उनको पता है कि ऑडियंस भी जज्बाती है, ऑडियंस जज्बातों में गालियां दे रही है और जज्बातों में आकर ऐसा कर रही है। लेकिन मुझे बताएं कि जब जिस तरह युसरा ने कहा कि मुझे पता लगा इन चीज़ों के बारे में, तो मैं इंस्टाग्राम पे आया। मैंने कहा कि अच्छा, मेरा जो फेवरेट इन्फ्लुएंसर ये बात कर रहा है या नहीं कर रहा। मेरा फेवरेट इन्फ्लुएंसर ये तो मुझे कह सकते हैं ना कि भाई होल्ड ऑन, सुकून करो, पता है मुश्किल है, पता है मुश्किल हालात हैं, और इन पॉइंट्स के ऊपर हमेशा, जैसे युसरा ने मेंशन किया कि ये बातें होती हैं कि इन्फ्लुएंसर्स को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि इस टाइम के ऊपर एजुकेशन देनी चाहिए। इन टाइम के ऊपर तो खैर पहले देनी चाहिए, बट ये टाइम है एजुकेट करने का लोगों को कि ट्रॉमा रिस्पॉन्स। आपको क्या लगता है पाकिस्तान में लोगों को इस बात का पता है ट्रॉमा रिस्पॉन्स के बारे में, कि लोगों का ट्रॉमा रिस्पॉन्स डिफरेंट होता है? जो इतने डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट के लोग हैं, क्या वो अंडरस्टैंड करते हैं कि इस बंदे का ट्रॉमा रिस्पॉन्स डिफरेंट हो सकता है और इस बंदे का डिफरेंट हो सकता है? नॉर्मल लोग नहीं करते, हम लोग करते हैं। अगेन वही बात है कि आपको थोड़ा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा अपनी ऑडियंस को, और आप एक सर्टेन पोजीशन के ऊपर हो, और आप इंसान हो, ये तो 100% श्योर है। आपके भी किसी को ये जो ऑडियंस है ये गैस लाइट नहीं कर सकती, ये प्रेशराइज नहीं कर सकती कुछ भी करने के लिए। लेकिन आप अपोजिशन ऑफ पावर के अंदर हो, आप एक सर्टेन एक्सपोजर के अंदर हो। आप बहुत से लोगों को मैंने सुना इन्फ्लुएंसर्स को बोलते हुए कि हमें इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में नहीं पता, हमें पता नहीं है कि क्या चल रहा है, कितनी देर लगेगी। एक वीडियो आप देखें वॉक्स की नकबा, जाकर आपको पता लग जाएगा के अंदर हुआ क्या है वहां पर। आप ना एक्सप्लेन करें लोगों को, आप थोड़ा सा समझ, मतलब खैर एक मिनट मैं इस चीज के ऊपर दोबारा आता हूँ। युसरा ने बात की थी कि लोगों के अकाउंट शैडो बैन हो रहे हैं, कि वो जो वो बॉय है, क्या नाम है उसका, सभी नाम है मेरे ख्याल से, जो सभी उसने, यो और या जी जी, वो जो एक्टिवली पोस्ट कर रहा है उसने, और बहुत से लोगों ने शैडो बैन से ना वो हैक बताया एल्गोरिदम को हैक करने के लिए। आप क्रिएटर्स इतने समझदार हैं जब आप कहते हैं कि हम लोगों ने वो ब्रेक कर दिए हैं, एल्गोरिदम ब्रेक करके इतने व्यूज ले लिए और हम लोगों ने हैक निकाले एल्गोरिदम को तोड़ने का और ये सब करने का। आप 5 मिनट की या लाइक एक आधे घंटे की रिसर्च करके आप कर सकते हैं कि किस तरह पोस्ट करेंगे तो व्यूज कम नहीं होंगे। मेरा भी जब मैंने पहले दिन एग्रेसिवली पोस्ट किया तो मेरे 3-4 व्यूज रह रहे थे, तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ पोस्ट नहीं किया। जब सब पोस्ट खत्म हुई, मेरी स्टोरीज खत्म हुई हैं, तो मैंने अपनी कैजुअल 2 स्टोरीज डाली और फिर मैंने दोबारा डाला है। तो मेरी अब मैं इसी तरह करूँगा, कैजुअल स्टोरीज डालता हूँ, गाने डालता हूँ। इंस्टाग्राम को लगता है कि यार ये तो सही चल रहा है, फिर मैं दरमियान में अपडेट करता हूँ अवेयरनेस के लिए। तो हैक्स हैं, लेकिन आप बिल्कुल ही डेड हो गए और आप गैस लाइट कर रहे हो। और अगेन जिस तरह जुनैद भाई ने तो अच्छी तरीके से किया, कुछ लोग कह रहे हैं कि आप अपोलोजाइज करो और ये करो और वो करो, जबकि वो अगेन नहीं समझ रहे कि डिफरेंट डिफरेंट स्पेक्ट्रम्स हैं। ये वो बंदा है जो कि आपकी बात, कि जो कि ट्रॉमा रिस्पॉन्स नहीं समझ रहा, जो कि शैडो बैन को भी नहीं समझ रहा, और जो कि बहुत से डिफरेंट एलिमेंट्स को नहीं समझ रहा। आपने मुझे बताया क्या इसके बारे में? क्या मेरे फेवरेट कंटेंट क्रिएटर ने मुझे बताया ट्रॉमा रिस्पॉन्स के बारे में, शैडो बैन के बारे में, उसके बारे में कि वो पैसे कैसे कमाता है, उसकी लाइफ कि वो इफेक्ट कैसे होगी उसकी लाइफ? सिर्फ Do आज you ये think, बोलना। in a way, Yusra, if I were to ask you, do you think it even justifies the shadow ban, the trauma response, the all of those things? अगर मैं इसको फ्लिप करूं और एंगल को, और मैं कहता हूं कि यार आपकी ऑडियंस आपको इस वजह से फॉलो करती है बिकॉज आप एफर्ट डालते हैं, आप चीज़ों को समझते हैं, आप उसके अराउंड क्रिएटिव वे से आप उस चीज़ को कम्युनिकेट करते हैं। इन अ वे आई कैन debunk the entire argument by saying कि भाई ठीक है, अगर आपको शैडो बैन हो रहा है लाइक खयाम सेड कि आप एल्गोरिदम को स्मार्ट तरीके से आप उसको हैक कर सकते हैं। अगर हर बंदा, लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि जी हर बंदा इस बारे में बात कर रहा है, इससे क्या फायदा, तो आप क्रिएटिविटी इसमें लेकर आ सकते हैं। एक्चुअली टुडे आई सॉ अ वीडियो बाय अरब इन्फ्लुएंसर्स, तकरीबन कोई 10-12 इन्फ्लुएंसर्स ने मिलकर बनाई, जिसमें उन सब ने डिफरेंट एक स्क्रिप्ट ऑफ सॉर्ट्स रिकॉर्ड किया। और वो स्क्रिप्ट ये कह रहा था कि वो बता रहा था कि सिचुएशन क्या चल रही है, क्या क्या चीजें फेक हैं। तो उन्होंने एक अपडेट दी मैस मार्केट के लिए, और उन्होंने बड़े स्टाइलिश तरीके से उसको सारे को इकट्ठा किया, इकट्ठा करके उन्होंने कंटेंट, सो इट वाज in 2 minutes it was beautifully done, where they literally पिछले 2 हफ्ते 3 हफ्ते का कंटेंट सारा उन्होंने कंप्रेस करके उसके अंदर डाल दिया। एंड ऑब्वियसली इट वाज गोइंग वायरल बिकॉज वो अगेन वही एल्गोरिदम नहीं ब्रेक किया, हालांकि वो डायरेक्ट कंटेंट था, बट उसमें एल्गोरिदम में भी वो वायरल जा रही है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा कॉप आउट नहीं फील हो रहा कि जब पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होता है तो जो क्रिकेट नहीं भी समझता वो उसने पार्टिसिपेट तो करना ही करना होता है कि बाबर आजम जिंदाबाद, बाबर आजम खबीज से आजम, so why not here when clearly the audience that have made you, the audience that has given you respect, वो आपसे certain expectations लगा के बैठी हुई है, तो उस पे
ऑडियंस के खिलाफ जाना, डू यू थिंक दैट्स जस्टिफाइड? No, it's not justified at any point. Audience ने आपको follow ही इस वजह से किया हुआ है because they hold you in such regard that whenever like there is something going on in any other like कोई भी area में, like they want to hear your opinion, right? That's why we call influencers as key opinion leaders. That's how we refer them in the industry, right? Okay, they hold certain opinions, they research, they tell us, and it's the job of the content creator to be creative, right? So if you have the capacity, like it's like if you are in the state that you can talk about it, it's not like कि नहीं करना चाहिए या हो रहा है या नहीं हो रहा, it's like आपने बिल्कुल गायब हो गए हैं या वो वाली तो सिचुएशन बिल्कुल अलग है. It's just like if you can do it, like right now you feel like I have the mental capacity to do it and I do have the platform as well, you will have to find creative ways to do it. And if somebody is saying something to you and because you're not doing it, you're gaslighting them, और आप कह रहे हो कि नहीं मेरे से नहीं हो रहा या shadow ban है या ये है वो है, it's definitely not justifiable. You cannot say to the audience कि ओ नहीं ये नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता. आप aggressive नहीं हो सकते उनकी तरफ. You have to understand that where they are coming from. They hold you in a place कि जहाँ पे वो चाहते हैं कि आप use करें अपना platform. And then what kind of a content creator, like how you are defines, like it's defined by how creative you can go. And if like you can use so many different ways to talk about it, like जिस तरह से ख़याम ने mention किया कि there are so many ways to fight shadow ban only if you want to. Makes right? sense. It's all about only if you want to. मैं थोड़ा सा ऑडियंस के साथ की तरफ आऊंगा. I'm going to take some comments here. आतिफ अफीफ मलगानी साहब कहते हैं the bigger question is why are social media platforms banning people for voicing their opinions? Where is the freedom of expression that they always talk about? सर वो तो फ्रांस ने जब बैन There is किया. no such thing as absolute freedom. हाँ वो हमारी सोसाइटी, हमारी जो दुनिया है ना वो एंटी मुस्लिम है. और जब भी लाइक कुरान को जब चलाते हैं तो फ्रांस कहते हैं कि इट्स फ्रीडम ऑफ स्पीच, लेकिन आप जब किसी इनोसेंट सिविलियन के बारे में बात करेंगे, स्पेशली ऐसा मुल्क हो जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी हो वहाँ पर, तो उनको डिमोनाइज करते हैं, डिह्यूमनाइज करते हैं. तो वो ये तो सवाल ही नहीं है, लाइक लिटरली इसका कोई जवाब भी नहीं है. खैर I mean, I feel like मैं तो even उसको it's not necessarily or inherently Muslim, right? मैं उसको global South पे लेकर जाऊंगा कि वही मसाइल we saw कि South Africa में for the longest time they had a apartheid system. South America के साथ वो बहुत कुछ करते रहे हैं for quite a while. And so global South now is beginning to have enough of the rule-based global order, or as it's called. वो सब चेंज हो जाए, यही टाइम है. एस साहब कहते हैं जी मोनेटाइजेशन मैटर्स फॉर क्रिएटर्स, इट्स अ गेम ऑफ एल्गोरिथम्स नॉट ओपिनियंस. अगेन आई मीन मेरी कल पॉडकास्ट आई है ख़याम साहब के चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं. जैसे मैंने पूरा एक्सप्लेन किया कि एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री है, मोनेटाइजेशन है, वो सारा कुछ है. बट द प्रॉब्लम इज व्हाइल दैट होल्ड्स ट्रू, इज इट जस्टिफाइड दो, राइट? लाइक फिर तो आप यू बिकम अ प्रोडक्ट, आप एआई बन जाओ बिकॉज बस आपने मोनेटाइज करना है अपने आप को. और चले मैं कॉन्वर्सेशन को थोड़ा सा फ्लिप करता हूँ. आपकी मोनेटाइजेशन डायरेक्टली आपके कंज्यूमर पे है. कंज्यूमर आपका सारा लोकल है. कंज्यूमर अगर आपको कह रहा है कि यार से दिस डू दिस, तो ये तो एक रॉक एंड हार्ड प्लेस है ना. कि एल्गोरिथम, या तो मैं एल्गोरिथम को बचा लूं या मैं कंज्यूमर को बचा लूं, बिकॉज वन वे और द अदर आई एम गोइंग टू एलियनेट माय प्रोडक्ट. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कंज्यूमर अगर चला जाएगा, आपने एल्गोरिथम जितना ही बचा लिया, अगर इन्फ्लुएंस डायरेक्टली कंज्यूमर की रिस्पेक्ट चली गई जिस दिन, उसके बाद आपके पास कुछ ऐसा रह नहीं जाएगा. और लेट्स से कि जो है ना क्रिएटर, आप उसको बोलेंगे यार वो इतना वो करता है, इतना मिल करता है और इतने पैसे कमाता है, उसको परवाह ही नहीं होती, उसको सिर्फ व्यूज की परवाह है. ठीक है, तो भाई लाइक यही तो टाइम है कि आप रिसर्च करो और आप इसी चीज को इस्तेमाल करो आप लोगों को वो करने में, ज्यादा ऑडियंस गैदर करने में. As in like this is the right time to use this title or use these words. ठीक है, इतने जर्नलिज्म प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि डेड बैठे हुए हैं, जो कि मतलब फ्राइडे को ही होना शुरू हुआ था आई गेस जब ये स्टार्ट हुआ था, और मंडे को पोस्ट कर रहे हैं लास्ट 48 आवर्स. भाई लास्ट 48 आवर्स मुझे सबने बता दिए हैं, आपको लास्ट 48 आवर्स बताने की जरूरत नहीं है. 50,000 प्लेटफॉर्म है जिन्होंने बता दिए क्या हुआ. अब मुझे बताओ कि आपका क्या ओपिनियन है. अब हमें क्या करना चाहिए? पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म आप अब अपना ओपिनियन दो कि अच्छा यार पाकिस्तानी ऑडियंस को आपने क्या बताना है, आपको पाकिस्तान में पर्सपेक्टिव देना है कि पाकिस्तान में लोग क्या कर रहे हैं क्या. लेकिन कोई भी कंटेंट तो कुछ आ ही नहीं रहा. मेरा तो बहुत बड़ा ये इख्तिलाफ है कि
कोई क्रिएटर जरा भी एफर्ट नहीं कर रहा कंटेंट बनाने मुझे में बताएं, जो इंस्टाग्राम पे तो चले हम कम से कम एटलीस्ट ये देख रहे हैं कि पीपल आर रीशेयरिंग, राइट, कंटेंट. YouTube के ऊपर, what's the landscape looking like? Are people talking about? There are a lot of commentary channels, right? People can theoretically talk about it. I mean, I know I've seen Jihad's work. Jihad Zafar is doing a good job. But beyond that, is anyone doing anything? There are a lot of, let's say, vloggers. There are a lot of people who daily content upload करते हैं. क्या वहाँ पर कोई कुछ आया I है? think people are talking about it, but it's the same, like, you know, whenever somebody used to do a video जिसपे लोग जाके देख रहे होते थे, वो normally आपकी feed पे भी आ जाती होती थी कि अच्छा, like आप जाते हो for you पे आ गई, आप देख लेते हो. But there is nothing on YouTube for you page that can be linked to like अच्छा इस बंदे ने बात की. If you search the topic yourself, that you might end up seeing the content that people are creating. Same is with the Twitter X वाली चीज, like people are talking about it, people are tweeting about it, but it's like random चीजें आपको ज्यादा नजर आती हैं. But then when you search the word, you go see like people are having debates about it and all of that, and then accounts are getting blocked for a reason like, you know, कि अच्छा आपने इस बारे में बात की है या की है ऐसा. अच्छा, The आपने अकाउंट platforms की are बात not की. very. There's a comment as well. SS साहब कहते हैं, भाई, if they say something and YouTube Meta bans the channel, then the game is over. No audience, no algorithm. And then sometimes I do think about that as well. क्योंकि मैंने multiple times जो मैंने बातें की हैं उर्दू में की हैं, तो होपफुली एल्गोरिथम को समझ नहीं आएगी इस चैनल के ऊपर. आज भी जो हम बात कर रहे हैं वो कैन बी कंस्ट्रूड इन मेनी डिफरेंट वेज. बट ये मेरे लिए भी क्वेश्चन रहता है कि यार ठीक है, हम जज्बाती होके कर तो दें, but what happens, because at the end of the day the global north is all powerful up until right now. तो क्या फिर बंदा बिल्कुल हिम्मत ही छोड़ दे? कोई वही वाली बात है, वाइडर डिस्कशन है ना, दिस नॉट जस्ट अबाउट दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट देन, क्योंकि ये रेगुलरली होता है जिसमें आपकी अपनी कंट्री के अंदर कभी कभार आता है, मसले आते हैं. वही वाली बात है, ये तो फिर हम बचपन से सुनते आते थे, हक की But हाँ, Muzamil आवाज like, उठाओ but तो don't कहते you हैं, हक think की that आवाज this is the fear that content creators will always have, not just for this topic. Like it's all about digital media पे आपका जब channel है तो this fear is there कि कुछ होगा, सस्पेंड हो जाएगा, बंद हो जाएगा. हमने वैसे भी देखा नॉर्मली लोगों का, कोई और स्टोरी लगा दी थी, कोई वैसी कॉपीराइट की वजह से सस्पेंड हो गया एंड ऑल ऑफ दैट. सो वो तो फियर रहेगा. लाइक दिस इज समथिंग दैट कम्स विद द करियर. आई फील लाइक you have chosen to be a content creator, digital creator, and with on online platforms, so this fear is going to be there. आई थिंक इट्स अ वेरी सीरियस फियर. वैसे बहुत अरसा लगा हाँ, कि लोग प्लेटफॉर्म बिल्ड करते हैं, तो उनको उनको ये डर होता है, मतलब कि अगर आपको अपने 1 लाख फॉलोअर्स की या मर के इतनी मेहनत करने के बाद और आपको एक नोटिफिकेशन आए कि हम आपका अकाउंट सस्पेंड कर सकते हैं, आपकी जो सस्पिशियस एक्टिविटी है, मतलब अगेन वो आपके जो वो सोर्स ऑफ इनकम ना भी हो, बट एक बहुत अरसे की मेहनत है, आपको दोबारा से वो दोबारा करनी पड़ेगी और उसमें बहुत टाइम लगता है. अगेन एंड दैट इज वेरी फेयर पॉइंट. बट अगेन किसी ने ये समझाया अपनी ऑडियंस को, ये समझा देना, मुझे बता दें ये बात, आप मुझे हाँ, बता मतलब दें कि यार आप या मुझे तो बता आप जो देना, है वो, हाँ, मे बी द आप मुझे रिस्पॉन्स बता इज द दें. प्रॉब्लम. हाँ, मे बी द हाँ, रिस्पॉन्स इज द आप मुझे प्रॉब्लम. बोले कि यार मैं नहीं कर सकता, शैडोमैन हो जाएगा, ये हाँ, प्रॉब्लम हो जाएगा, मैं मुश्किल है मेरे लिए, तो मैं टेक्स्ट बेस कर लेता हूँ, मैं कोई जुगाड़ लगा लेता हूँ. मैंने कहा से बस शेयर कर दिया ऑडियंस के साथ कि कनेक्शन है आप लोगों का. ऑडियंस समझती है, ऑडियंस बस सवाल पूछे कि आप चुप क्यों. आप लिटरली एजुकेशन पे वीडियो बनाने लग जाएंगे. अच्छा मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है, नहीं बताना चाहते तो आप बता दें कि अच्छा ये वो कर ले, ये तो बड़ा बेसिक ब्लैक एंड व्हाइट नजर तो आ रहा है ना हो क्या रहा है. आप अपना ओपिनियन दें, एनालिसिस ना दें बेशक, आप बता देंगे देखिए गलत हो रही है, प्रोटेस्ट पे चले जाओ. अभी एक आपको पता है प्रोटेस्ट हुआ इस्लामाबाद के अंदर, जिन लोगों ने बोला कि हम नहीं चाहते कि मीडिया कवरेज दें, हम अल्लाह के लिए करें. तो पॉइंट मेरा ये कि नियत तो साफ है, लेकिन प्रोटेस्ट पाकिस्तान में करने का कोई मतलब अगर मीडिया पे नहीं आ रहा वो तो नजर तो नहीं आ रहा ना कि वो क्या, मतलब कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट को तो खैर दिखाना है, बट लाइक मीडिया कवरेज ही जरूरत है इस टाइम. और इसमें बड़ी बहस हुई है एक बंदे के साथ, उसने मुझे रिप्लाई किया कि तुम जो प्रोटेस्ट पे जाते हो उससे कुछ होगा नहीं. तो मैंने बोला कि क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं, कहता है कि उसका सिर्फ एक ही हल है ना, जंग. तो मैंने बोला कि आपको शायद लगता है जंग नहीं हो रही, तो मैंने कहा आपको आई थिंक लगता है जंग नहीं हो रही. तो हर चीज की जंग है, नैरेटिव की जंग है, और फिजिकली भी लोग लड़ रहे हैं, और डिफरेंट बॉर्डर्स पे बहुत डिफरेंट एक्टिविटीज हो रही हैं. और वो क्यों हो रही है, पाकिस्तान का भी प्रॉपर कोई इन्होंने वो नहीं किया था
एक्टिवली उन्होंने बोला नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर उन्होंने बोलना शुरू किया। ऑब्वियसली पीपल आउटरीच और वो सब चीज़ें मैटर करती हैं और वो मीडिया पे नजर आती हैं, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो इट डज मैटर, आप प्रोटेस्ट पे जाते हैं तो इट डज मैटर। मुझे बताएं, पाकिस्तान इज, अगर मैं मुस्लिम वर्ल्ड को देखूं ना, इट इज प्रॉब्ली द नंबर 1 मोस्ट इंग्लिश स्पीकिंग मुस्लिम कंट्री इन द वर्ल्ड. Someone can fact check me probably, but जितना मुझे याद है कि in terms of population that speaks English, Pakistan was in the top 3 and top 3 or top 5, और बाकी सारी non-Muslim countries थी. Being there एक बड़ी power है कि यार मेरे पास English language है, which is a global language. Why hasn't English language global creator emerged from Pakistan? Because वही वाली बात है कि आपने कहा जी silos में कर रहे हैं, अपने लोगों को बताई जा रहे हैं. हालांकि मैं इस वक्त, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं रील्स पे जा रहा हूँ ना, तो आई एम डिस्कवरिंग पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. आई एम डिस्कवरिंग पीपल फ्रॉम इराक इस टाइम के ऊपर, जो कि इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं. द एल्गोरिथम क्लियरली सीज दैट आई एम कंज्यूमिंग पैलेस्टाइन कंटेंट, तो वो मुझे उस क्रिएटर को दिखा रहा है. so the algorithm in a lot of ways, in my opinion, is actually conducive अगर आप उसको तरीके से खेलें. अगर आप इमोशंस के बजाय फंक्शनली यूज करें और आप उसमें राइट लैंग्वेज, लाइक पर्टिकुलरली अगर आप देखें ना, पैलेस्टीनियन अमेरिकन्स वो बहुत अब वो हो चुके हैं, सोफिस्टिकेटेड हो चुके हैं इन द वे टू, बिकॉज उनको समझ आ गई है कि ये लोग किस तरीके से लैंग्वेज और प्रोपेगेंडा यूज करते हैं और किन वर्ड्स के ऊपर ये शो डालते हैं. तो दे मूव अराउंड इट, बट वो बैन भी नहीं हो रहे, वो वायरल भी हो रहे हैं. सभी इज अ ग्रेट एग्जांपल. लाइक इफ एनीबडी हैज फॉलोड हिज ब्रॉडकास्ट चैनल, उसे बड़ा एक्टिवली बता रहा होता है कि यार व्हाट आर द वेज टू बाईपास द एल्गोरिथम, व्हाट आर, हाउ डू यू नॉट यूज सर्टेन वर्ड्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. It's fairly disappointing that in Pakistan you don't have a single global, like this could have been the time for people to aggregate factual information and be able to push it out there in English language, and the world would have seen it, right? Again, पूरी जिंदगी हम गवर्नमेंट को बोलते हैं गवर्नमेंट बुरी. यहाँ पे तो कंटेंट क्रिएटर ये कर सकता था ना, कुछ भी नहीं है, कैमरा उसके पास है, एडिटिंग उसके पास है, the world is on his fingertips through the internet. Are we just, as people, are we just incompetent? आई थिंक ये हम लोग ने शेमलेस प्लग है यहाँ पे मेरी पॉडकास्ट के ऊपर. आप क्या करते हैं, हमने बात किया मुज़म्मिल भाई के की ज़िंदगी के बारे में कि वो क्यों इतनी अपनी जवानी के अंदर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और इतनी इंग्लिश में बातें कर रहे थे. आई थिंक ये अगेन ये वही बात आ जाएगी जो हमने पॉडकास्ट पे की है कि हम ये सोचते नहीं कि हमारी आवाज़ बाहर जा सकती है. हम डिफीट का मेंटालिटी, लाइक ऑलरेडी एवरीबॉडी थिंक्स के ओके शैडो बैन हुए में, तो बहुत सारों ने किसी और का सुन के ही कोशिश नहीं की. हाँ, वो स्लेव ऐसे भी थोड़ा उठने की कोशिश करता है, एक थप्पड़ लगाते हो, सीधा चुप करके बैठ जाता है. हालांकि एक बंदा होता है सामने, 1 लाख स्लेव होता है, लेकिन दे नेवर रियली नो के उनकी पावर है. हमारी थोड़ी सी आई थिंक अगेन इट टेक्स टाइम, लेकिन जनरली अगेन मैं ही कहूँगा कंटेंट क्रिएशन जो इंडस्ट्री है ना वो इतनी मेच्योर नहीं है. जैसे अभी जो हम प्रॉब्लम्स बातें करें हम आपस में, फॉर एग्जांपल एज बेसिक एज के इन्फ्लुएंसर ये बात बोल रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर ये बात बोल रहे हैं कि मुझे प्रेशराइज ना करो, जबकि ही कॉल्स हिमसेल्फ एन इन्फ्लुएंसर. ठीक है, आप लेफ्ट राइट आगे पीछे सारे इन्फ्लुएंसर्स एजुकेशन दे रहे होते हैं कि हम लोगों को बॉडी शेम ना करो, हम लोगों को ये चीज़ें ना कहो, वो चीज़ ना कहो, जो कि सब वैलिड है और ज़रूरी है. ठीक है, तो अवेयरनेस तो आप दे रहे हैं ना. अब आप ऐसे नहीं कर सकते ना कि आपको जब कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम के ऊपर. अगर एक कंटेंट क्रिएटर को नहीं पता ना कि क्या हो रहा है, इंटरनेशनल रिलेशन का क्या प्रॉब्लम है, इन चीज़ों का क्या प्रॉब्लम है, तो सोचेंगे जनरल ऑडियंस को कितना ही पता होगा. यहाँ पर शाइन करेंगे ना आप लोगों की, आपकी जो कंटेंट क्रिएशन, जो आपकी आर्टिस्टिक पावर्स हैं और सब चीज़ें, कि आप यहाँ पर आप उन लोगों को बताएं कि अच्छा मैंने तो असल में ना वो बना लिया था, मैंने एक इंस्टाग्राम बनाया, वो मेरा थोड़ा सा मसला है इंग्लिश का, मैंने एक इंस्टाग्राम वो बनाया, मैंने कहा कि इंग्लिश में कंटेंट बनाता हूँ ताकि पाकिस्तान से नजर आए लोगों को कि पाकिस्तानी क्या सोच रहे हैं, और उर्दू में भी बनाऊंगा. और फिर मैंने बोला कि वो जो सभी भाई हैं उनकी वीडियोस को डिफरेंट लैंग्वेजेस में ना वो उसमें कैप्शंस में डाल के कन्वर्ट करता हूँ, डिफरेंट लाइक वो जर्मन लैंग्वेज में डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में, और लगाता हूँ डिफरेंट इंस्टाग्राम बना के. लेकिन अगेन वो मैं जब वीडियोस देखता हूँ ना तो थोड़ा सा भाई मुझे ये बताएं, आपने बोला कि इंग्लिश का मसला है, आपने कभी जर्मन लोगों को देखा है जब वो ग्लोबल कंटेंट बनाते हैं, या स्वीडिश लोगों को, या जापानीज लोगों को? हाँ, ये चीज मैंने चीज लाइक अंदाजा लगाया कि चाइनीज भी इवन दो और सऊदी भी एक्सेंट उनका अपनी मर्जी अंग्रेजी बोल रहे हैं. Yeah, I think it's the acceptance of the fact that it's not your native language. So yeah, like as long as it's comprehensible. I mean, मैंने Khayyam को सुना, right? और
एक सेकंड मेरा कैमरा क्या देगा यार। स्पॉट बॉय अगर मेरी बिल्ली को हटा दें तो वरना ये सारा सिस्टम तबाह होने वाला है। आई डू अपोलोजाइज फॉर दैट। Thankfully, that disaster was averted. But nonetheless, हाँ मैं ये कह रहा था, देखें अगर अभी आपने कहा जी हमारा सेल्फ एस्टीम का मसला है, आपने सेल्फ एस्टीम का मुजाहिरा किया हमें इस उसके ऊपर, बिकॉज आई हैव सीन यू स्पीक, आप प्रॉपर ग्रामर के साथ इंग्लिश बोलते हैं। शायद एक्सेंट का मसला होगा, लेकिन वो एक्सेंट का मसला कॉन्टेक्स्ट में है कि यार इतना बताया नहीं है। मैं आई थिंक उस पे था इंग्लिश बोलने, साथ में मैंने इंग्लिश बोलने वाला यूज किया, इंग्लिश वर्ड्स के ऊपर आई थिंक मैं ज्यादा परेशान था, क्योंकि क्या ऐसा वर्ड ना यूज करूं, फॉर एग्जांपल जिस तरह बहुत से लोग इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट बोल रहे हैं और बहुत ज्यादा इस तरह के जो वर्ड्स है ना, बस मेरा ये डर था कि ऐसा कोई वर्ड यूज ना करूं जो कि पर्पस को डिमिनिश करे। राइट, मेक सेंस। आई थिंक मैं वर्ड्स की बात करता इंग्लिश में। बट आई थिंक वो जो बात हो रही थी ना पिछली वाली के लोग किस तरह से क्यों नहीं हुआ है, इट्स आई थिंक इट्स अगेन अ वेरी Pakistani advertising industry problem that we don't know how to be creative. That unfortunately is very true. एक साहब ने बोला है, एसएस साहब कहते हैं आवाज जा सकती है बट कैन वी अफोर्ड। इसमें ना आई वुड एक्चुअली टेक अ लीफ आउट ऑफ द इंडियन प्लेबुक, पेज आउट ऑफ द इंडियन प्लेबुक। जो रिसेंट कनाडा का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, ऑल्दो अगेन आई वाज वेरी मच अगेंस्ट द चेस्ट थंपिंग के एक सर्टेन लेवल ऑफ एरोगेंस आ गई थी कि यार न्यूक्लियर मारो कनाडा को, ऐसी की तैसी उसकी। आई मीन लेट्स बी रियल हियर, दैट्स नॉट पॉसिबल। बट what we did see was that a consolidated effort clearly put the Indian side of thought out in front of the West. यहाँ पर एक बहुत क्लियर ग्लोबल नॉर्थ और साउथ का कॉन्फ्लिक्ट था, और उसके अंदर जो है वो बड़ा क्लियर था कि यार कनाडा कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा, आपने एक बंदा फड़का दिया उनके कंट्री में जाकर। लेकिन इंडिया ने बड़ा क्लियरली अपने ग्राउंड को होल्ड रखा, और अब आप देखें फिजल आउट हो चुकी है वो कॉन्वर्सेशन, इट्स गॉन। I feel like with India we've actually seen, और सिर्फ ये नहीं, उनका बहुत सारा कंटेंट ये टॉप डाउन उनकी लीडरशिप से आती है कि उनके फॉरेन मिनिस्टर जाते हैं और जाके उनको बड़ा क्लियरली स्टेज के ऊपर बैठ के बोलते हैं कि भाई हमें हमारी सॉवरेनिटी है, हम अपना काम करेंगे और आप प्लीज इजी हो जाएं, और उनकी पब्लिक उस चीज को एम्यूलेट करती है। हमारे यहाँ देयर इज अ सर्टेन लेवल ऑफ अनफॉर्चुनेटली अगेन लो सेल्फ एस्टीम टॉप टू बॉटम, जिसमें हमें होता है यार गोरे के सामने हमारी तो औकात ही क्या है। अगेन आवाज, कैन वी अफोर्ड, I mean, sanctions is such a boogeyman in Pakistan. Do you know Iran is fully under sanctions over the last 20 years. आप आज गूगल करें और ईरान के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के सारे निकालें, वहां पे देखें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वुमेन, वहां पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखें, वहां पे आप जाके देखें कि जी लोगों की लिटरेसी कैसी है, वहां पे आप लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखें, सब पाकिस्तान से माइल्स अहेड है। सो सैंक्शंस इज क्लियरली नॉट द ओनली थिंग दैट कैन मेक और ब्रेक यू। यहाँ पर एक नेशन की सेंस ऑफ नेशनहुड आती है, आई डोंट नो व्हाट द वर्ड वुड बी, बट यहाँ पर क्लियरली वी लैक अ लॉट ऑफ खुददारी। Unfortunately there's like, I don't know if it's the right example to give here or not, but जिस तरह से कुछ प्रोडक्ट बैन होने की बात आती है ना, लाइक अ लग्जरी प्रोडक्ट दैट आपको बहुत अच्छा लगता है, खाने का भी कोई इस तरह से, यू वुड फील इट इन योर हार्ट कि अच्छा ठीक है बैन हो जाना चाहिए, बट नहीं मुझे तो अच्छा लगता है तो मैंने तो लेना है ना जाके। सो इट्स ऑल लाइक दैट कि आप अफोर्ड वाली बात भी नहीं, इट्स मोर लाइक हम बस बात करना चाहते हैं, हमारे अंदर वो वाली चीज बहुत लैक करती है कि बहुत खोखला सा हो जाता है। एक चीज है कि यार आपने बात करनी है लेकिन आपने स्टेप एक्चुअली में नहीं लेना, बिकॉज स्टेप लेने से पहले ही आप 2 सवाल पूछ लोगे, ओहो हम अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं, वो कर सकते हैं या नहीं होगा। आई थिंक इट्स लाइक दैट मेंटालिटी, क्योंकि नहीं हम अपना सोच रहे होते हैं कि नहीं हमें हमारी अपनी लग्जरी इंटैक्ट रहे, बाकी हाँ हम बात कर रहे हैं कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये बात नहीं कर रहा, वो बात नहीं कर रहा, इसने नहीं बोला या उसने नहीं बोला, ऑल थ्रू लाइक योर ओन लग्जरी कि अच्छा मैं अपनी जगह पे सही बैठा। मैं अगर इसमें एक और ट्विस्ट डालूं, मैकडॉनल्ड्स का आया था स्टार्ट में, मैकडॉनल्ड्स इजराइल स्टार्टेड गिविंग फ्री मील्स, उसके बाद फिर ज़ाहिर बैकलैश स्टार्ट हुआ, बड़ा क्लियर कंसोलिडेटेड पीआर एफर्ट नज़र आ रही थी कि मैकडॉनल्ड्स ग्लोबल से आया है, सबकी सेम इमेज थी, सबका सेम विजुअल था। फिर मैकडॉनल्ड्स कतर, मैकडॉनल्ड्स पाकिस्तान, मैकडॉनल्ड्स टर्की, सब ने स्टेटमेंट्स डाली, सब ने पैलेस्टाइन के लिए प्लेज किया, एक काउंटर साइड इमर्ज हुई,
और मैकडॉनल्ड्स पाकिस्तान की पर्टिकुलरली उन्होंने बड़ा जी डिटेल में लिखा, उन्होंने कहा कि जी हमारे तो बहुत सारे वर्कर्स हैं और उनको डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा उनकी लाइवलीहुड पे, विच डेफिनेटली होल्ड्स ट्रू कि मैकडॉनल्ड्स जो है वो काफ़ी हद तक लोकलाइज हो चुका है, और जब आप मैकडॉनल्ड्स खाने जा रहे हैं तो उसका एक बहुत बहुत स्मॉल परसेंटेज एसेंशियली पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, उसके अंदर लोकल इकोनॉमी का एक बहुत मेजर कंपोनेंट है जो कि बॉयकॉट से इम्पैक्ट होगा. हाउ वुड यू, व्हाट वुड योर थॉट्स बी, बिकॉज दिस इज अ डिलेमा राइट नाउ, राइट? क्योंकि Yeah. थियोरेटिकली बीडीएस मूवमेंट ग्लोबली सेज कि मैकडॉनल्ड्स को आपने हिट करना है. मैकडॉनल्ड्स इंडिविजुअली दोनों साइड्स को डोनेट कर रहा है, देयर प्लेइंग बोथ साइड्स, देयर प्लेइंग द अल्टीमेट कैपिटलिस्ट गेम. और मैकडॉनल्ड्स पाकिस्तान पर्टिकुलरली कह रहा है कि यार हम तो कंप्लीटली लोकल है, वी नीड टू, हमारी तो बिजनेस जो है वो thousands of people are going to be impacted by that. And so one does step back for a bit and think कि यार अच्छा, what's the rational way to go about it? What do you guys think? I mean, for me, like it's more like obviously बड़ा इमोशनल वर्सेस लॉजिकल डिबेट है. इमोशंस कहेंगे कि बस जिस जो भी इन्वॉल्व है ना बैन कर दो फॉर लाइफ, मैंने तो कुछ करना ही नहीं है इन लोगों के साथ, राइट? बट देन यू थिंक अबाउट इट कि हमारे अपने लोग, जैसा आपने पॉइंट आउट किया कि अच्छा एम्प्लॉइज तो पाकिस्तानी हैं, उन्हें तो उनकी तो डायरेक्ट इनकम हमारे साइड से ही है. इट्स अ वेरी like it's things like this make the situation more like it's not black and white. It's not black and white as we would like to think, not about the entire thing that's happening, wo to clear, aapka stance clear hai us pe, but everything else, it's not going to be like black and white. और बहुत सारी चीजें बस collateral damage होती हैं, होती है ना, हर जंग और हर उस चीज का conflict के there's so many collateral damages, and it's like you don't even know how to go about it, like what's the right way to do it, like should I go to McDonald's or not, should I eat this or not, like what I'm doing with my wo wali situation hai. For me it's there is no right answer. Right. Khush Patel साहब कह रहे हैं, Muzamil bhai, it's about credibility and using same law you hold dear to every situation. If you criticize Israel, you should also criticize Gaza killing civilians, then the whole world will listen to you. Khush Patel bhai, before I move to the guests, I would like to answer this myself. To be very honest, find me a content piece of a prominent Muslim voice that has not condemned the original Hamas attack, followed by the condemnation for what's happening in Gaza right now. P.S. Morgan का content है, बहुत viral हो रहा है. Every single pro-Palestinian voice has come in. Every single one of them has condemned the original Hamas attack. Every single one of them has asked Piers Morgan to condemn what has followed, and he has fallen short. The problem is कि अगर आप अभी भी आपको ये लग रहा है, and I understand you're hearing the Indian side of narrative, जो कि relatively pro-Israel है, क्योंकि वो justification देता है Kashmir wali. I get that. That's a geopolitical play, and you guys are using that, and that's how you will define कि क्या सही है क्या गलत है. Bias सबके होते हैं, हमारे अपने बहुत सारे biases हैं. But the problem is that today what's happening in Israel and Palestine is becoming abundantly clear. As more and more information has come out, it's becoming abundantly clear that it is not about laws, it is not about what is right and wrong, it is not about the rule-based world order, it is about the hegemony of the global north and the Western world order. And that's not just me saying it, that is a lot of countries in the world, a lot of people in the world जो ये बोल रहे हैं, but unfortunately the Western media refuses to acknowledge that. Piers Morgan, for all his faults, I would agree that if there is someone who has done like a lot for the Palestinian cause, it is Piers Morgan, because जितना उसने स्पेस दी है फॉर द ऑल्टरनेट ओपिनियन, वो आज तक दी ही नहीं जा रही थी, दरवाजे बंद किए हुए थे, घुटन हो रही थी लोगों की वजह से, एग्रेशन आ रहा था. तो उसने तो एक्चुअली कम से कम लोगों का वो एग्रेशन ऑन सम लेवल उसको डिफ्यूज किया है by giving them the space. But anyways, what do you guys think? Because this is the sort of narrative which is why मैं कहता हूँ ना कि पाकिस्तान में लोग ये कहते हैं यार मैं कोई जर्नलिस्ट थोड़ी हूँ, मैं थोड़ी लोगों को बताऊं कि पैलेस्टाइन के ऊपर इस वक्त क्या हो रहा है, कितने बॉम्ब्स फट गए, कितने हो गए. I get it. But then there are a lot of these sort of narratives on social जिनको आप deconstruct कर सकते हो as content creators. लेकिन वो unfortunately हम नहीं करते. Again, pertaining to this comment, do you guys have anything to say? I think आपने तो बोल दिया जो चीज़ बोलनी चाहिए थी और ज़रूरत थी, वो सारी चीज़ें बोल दी हैं. बट अगेन मैं यही कहूँगा कि ये खुश पटेल भाई हैं, ये काफ़ी अरसे से
इनको मैं देख रहा हूँ, हमारे कंटेंट से एंगेज कर रहे हैं, हमें फॉलो करते हैं। और मैं यही कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि हो सकता है ना कि उनको जो उनके पास जो अभी तक कंटेंट पहुँचा हो ना, वो पहुँचा ही ना हो, जो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है? मैं यही कहूँगा कि आप पहले ज़रा सा गूगल करेंगे ना, आपको वो नज़र आ जाएगी, हिस्ट्री नज़र आ जाएगी। हिस्ट्री जब नज़र आएगी ना, तो फिर आप कहेंगे कि ओके, मतलब कि यहाँ पर तो लाइक नज़र आ रहा है कि अगर The हम world लोग didn't कंडेम start कर on the 7th of October. यस, सो ये Yeah. इतना मतलब कि हम कर देंगे कि हम लोग हर मुसलमान ने जो है, हर मुस्लिम लीडर ने या जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो प्रो पैलेस्टीनियन है, वो उन लोगों ने कंडेम किया कि कहीं भी वो जो नहीं है, उनका क्या नाम है, उमर सलमान है शायद, उमर सलमान, ये yes. हाँ, बिल्कुल. उन्होंने एक ट्वीट भी की हुई है कि अगर ये किसी और कंट्री में हो रहा होता और किसी और रिलीजन के साथ के लोगों के साथ होता तो हम खड़े होते, और ये अगर इसराइल में हमास कर रहा होता तो हम उसके लिए भी खड़े होते, क्योंकि ये बात जो है ना, ये इस चीज़ की बात नहीं है कि मुसलमान या क्रिश्चियन या कौन है, क्योंकि फ़लस्तीन में सिर्फ मुसलमान नहीं है, वहाँ पर वो भी क्रिश्चियंस भी हैं, और वो लाइक चर्च के अंदर वो ले रहे थे, पनाह ले रहे थे। बट यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि जो चीज़ हो रही है वो अनफेयर चीज़ जो हो रहा है, वो बहुत अनफेयर हो रहा है। और जो जिन लोगों ने जो कतर के अंदर जो वर्ल्ड कप हो रहा था, तो बियर ना लेके जाने के लिए इतनी आवाज़ें उठाई थी इस वेस्ट ने, उसको ह्यूमन राइट्स के ऊपर उनको उनको आज ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही। खैर नज़र तो आ रही है, अगेन वो पुश कर रहे हैं, शैडो बैन क्यों करें अगर वो नज़र ना आ रही होती तो वो प्रॉपर्ली पुश कर रहे हैं, और जो कि बहुत बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। और लाइक इस पॉइंट के ऊपर आप होपलेस फील करते हो, और आप दिल से ये विश करते हो कि अब थोड़ा सा ग्लोबल वर्ल्ड और चेंज होना चाहिए। अब ये जो दरिया के इस तरफ वाले लोग हैं, इनको यही होना चाहिए, समंदर के, और इनको ज़रा अपना एक ऐसे रूल बनाना चाहिए। Guys, तो ये we're at the हमारे लिए 51-minute mark. We're at the 51-minute mark. I'm going to wrap this up. I like कि ये हमारी ये वाली जो conversation है ये within 1 hour रहे. मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, there are now opening signs of this conflict spilling over and becoming much bigger than what we're seeing. Potentially a war in Syria or Lebanon, potentially a war in Iran. For people in Pakistan, that's not going to be something that's happening far off, जिसका हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है, और हम अपनी जिंदगियां गुजारते रहें और आगे चलते रहें. हमने देखा था अफगानिस्तान की वॉर के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे ऊपर किस तरह से आया, और फिर उसके ऊपर 80,000 जाने किस तरह से आया हुई. डू यू थिंक, एंडिंग रिमार्क्स अगर आप दे सकें, कि इन केस ये वॉर मजीद स्पिल ओवर होता है, डू यू थिंक पाकिस्तानी क्रिएटर्स, क्योंकि अभी तो चलो आप ये कहते हो ना कि यार यू नो व्हाट, लाइक देयर इज समथिंग दैट्स हैपनिंग, आई डोंट नो इनफ, आई मे नॉट नो वो अबाउट इट, मेरा तो काम फर्क है, मैं इसके बारे में कैसे बात करूं. बट अगर ये बढ़ती है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट रीजन के ऊपर है. डू यू थिंक पाकिस्तानी क्रिएटर्स, पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स एंड पाकिस्तानी थॉट लीडर्स हैव द लग्जरी टू रिमेन क्वाइट? No, I don't think so. I think वो वही वाली बात है कि you may say that you do not know enough right now to talk about it, then it means that you need to know enough to talk about it. Yes. Right? If your stance is that I do not know, I do not have the enough information or the right information, and referring to the last comment as well, if you feel like, हमें एक बात ये एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए that every single person of us, we do not know the entire information because वो हम तक पहुंच ही नहीं रही है, right? So we have to do our own research, we have to read articles, figure out, know enough and talk about it. Like I think जिस तरह से इसका spillover effect आएगा, every person in power in any way, like having any sort of power, they must educate themselves first, find the right creative methods to talk about it, because there's, आप हर जगह जुगाड़ लगा सकते हो, हर चीज को बीट कर सकते हो, if you want to do it and if you are willing to do it, and if you feel that that's an important topic to talk about it. If you do not, then that's like why are we even having this conversation वाली चीज़ है, right? So I think they must educate themselves and then they talk about it. That's what I feel like, उस टाइम पे कोई ये नहीं होगा कि यार अभी नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, या नहीं हो पा रहा. I think ये excuses हो जाते हैं, थोड़े से unjust हो जाता है to the people who are following you for your for your opinion, for like looking at you for support. Khayyam, what do you think? I think I'll just add to the Yusra's point कि अब मतलब कि मैं दरमियान में इस चीज़ के लिए ये भी सोच रहा था कि लेट्स से आपने नहीं अपडेट देनी कि क्या हो रहा है, आप नहीं हो जर्नलिज्म प्लेटफॉर्म, या फिर आप नहीं जर्नलिस्ट नहीं हो, लेकिन
आप ये तो कर सकते हो ना कि आप पहले खुद एजुकेट हो, आप लोगों से रिसोर्सेज शेयर कर दो, क्योंकि ऐसे भी हो दरम्यान में। और जो नकबा वाली वीडियो वो मैंने किसी रिसोर्स में ही मुझे नजर आई थी और मैंने देखी थी। तो आई थिंक कि कंटेंट अभी भी बना, और स्पेशली अगर कोई कंटेंट नहीं बना रहा या कोई मैंने एक और चीज़ भी नोटिस की है, इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर बहुत लोग कंटेंट बनाना चाहते हैं लेकिन वो फॉर सम रीज़न नहीं बना रहे। मैंने उस दिन 2 दिन पहले एक क्वेश्चन स्टिकर लगाया था, बहुत से लोगों ने मैसेज किया था, और मैंने उस चीज़ के ऊपर काम करना है कि मैं कुछ लोगों को लाइक हेल्प करूँ ताकि वो इंडिविजुअल क्रिएटर्स हैं तो वो लोग कंटेंट बनाएं, कि हमें ऐसे वॉइसेस की ज़रूरत है जो इन चीज़ों के ऊपर काम करें। बहुत कम क्रिएटर्स काम करें इन चीज़ों के ऊपर। बहुत, जिस तरह आपने कहा, इंडिया ने अपना नैरेटिव दिखाया है, ऐसा कंटेंट क्रिएटर्स ने भी दिखाया है। आप देखें यूट्यूब के सीईओ इज इंडियन, बहुत बड़े-बड़े लाइक बहुत मैसिव क्रिएटर्स हैं जो कि इंडियंस हैं, जो कि नहीं है तो वो टीम्स में काम कर रहे हैं बाहर के बड़े-बड़े क्रिएटर्स की। तो आई थिंक हम लोगों को थोड़ा-सा अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस डालना है। कैप्शंस के ऐप के अंदर अब इंग्लिश लिखा हुआ आगे, हिंदी और इंग्लिश का मिक्स है, इनका एक अपनी एक ज़बान से आ गई है, तो और आपका यूट्यूब जो है वो कन्वर्ट कर देगा जो ज़बान है। अगर आपने उर्दू बोली हुई है तो इंग्लिश बोली हुई है तो उसको वो हिंदी में कन्वर्ट कर देगा। तो अब ये हमारे पास ये एक्सेस आ जाएगा कि हम लोग भी इन टूल्स को इवेंचुअली अगर आज बनाना शुरू करेंगे तो कल को वहाँ तक पहुँचेगी। तो हमें एजुकेशनल कंटेंट बनाना चाहिए स्पेशली। और अगेन मैं यही कहूँगा, बी अ क्रिएटर। आप ज़्यादा वो कर रहे हैं ना वो कि अच्छा बनने की कोशिश ना करो, जस्ट बी अ क्रिएटर, लेट्स जस्ट कैपिटलाइज द टाइम कि लोगों को ये सुनना है, चलो मैं रिसर्च करता हूँ, बैठ के इसके ऊपर करता हूँ। मुझे भी इससे पहले नहीं पता था इतनी चीज़ों के बारे में जितना मुझे इसके बारे में पता लगा, क्योंकि मैंने एक्टिवली बैठ कर सुना है, देखा है, सर्च किया। सब कर सकते हैं ये, स्पेशली क्रिएटर्स के पास अगेन उनके पास उन्होंने स्मार्टली तरीके से इंटरनेट को इस्तेमाल किया तभी वो यहाँ पे पहुंचे। तो और अगेन बहुत क्रिटिकल था क्रिएटर्स के ऊपर, बट अगेन लोग बहुत सी फजूल गालियां दे रहे हैं, बोले अपना ओपिनियन दो और अपना एनालिसिस दो। हर बंदा एनालिसिस नहीं दे सकता, ओपिनियन एनालिसिस नहीं शायद दे दे सकते। दे, लेकिन एनालिसिस से तो आप ज्यादा फोर्स ना करें उनको। और Your क्रिएटर्स opinion के maybe इंसान again this is a very black and white situation for people in Pakistan, but बहुत सारे और इंसिडेंट्स होते हैं जिसके ऊपर आप नहीं दे सकते ओपिनियंस, बिकॉज फिर आप ओपिनियन देते हो, फिर लोग कहते हैं जी टोन डेफ ओपिनियन दे दिया, ये दे दिया, यू डू गेट दैट बैकलैश। सो पर्सनली आई मीन मेरा ओपिनियन जनरली उसमें ये है, मैंने सबका ले लिया है तो मैं अपना भी दे देता हूँ, कि पीपल हु, it's okay if people aren't posting, you can't pressurize them, but then the creator has to be sensitive to their audience's sentiments right now. और अगर वो पैलेस्टाइन के बारे में नहीं बात करना चाह रहा तो it would also be worthwhile to not say anything at all. और at the very least आप सीरियस काम कर रहे हैं, सीरियस बात कर रहे हैं, दैट्स फाइन, बट अगर आप पार्टी करते फिर रहे हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा टोन डेफ लगता है। तो यहाँ पर यू नो देयर आर साइड्स, वही वाली बात है कि थोड़ी सी इमेच्योरिटी ओवरऑल अक्रॉस द बोर्ड, एंड इफ maybe senior creators can begin to have people understand and humanize all sides, things might get simmered down a bit. Guys, thank you so much for coming in. This was very, very insightful. We are at the 58-minute mark and I'm going to wrap this up. For the audience, we're not wrapping up the live stream as yet. We're going to be wrapping up the guests, but to both of you, thank you so much for coming, and yeah, thank you for sharing the insight. Thank मेरी you for इनसाइट having होगी me. थोड़ी सी ऑल ओवर द प्लेस, बट यू गाइस नो, सो थैंक यू जो सो जो मच फॉर देख रहे हो जाके खयाम का चैनल जरूर देखें. I'm gonna put a link in the description as well for you guys to check it out. मेरी वहाँ पे podcast भी है, मैंने भी उसमें बहुत सारी stupid बातें की हैं. If you want to hear that, you can check that out as well. But guys, thank you so much, and we'll continue now with our regular uh, standard broadcast. मुझे थोड़ा सा पहले ऑडियंस जो बैठी देख रही है, मुझे ज़रा बताएं कि जी अल्फा टेस्ट कैसा रहा, formatting, conversation style, what are your thoughts first of all, प्रोडक्शन के बारे में खास बताइएगा, हमने बड़ी एफर्ट डाली है इन मेकिंग दिस ए इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस. जबरदस्त. अभी तक ऑडियंस तो खुश है. जो हमारे गेस्ट थे, गेस्ट की ऑडियो थी, गेस्ट की वीडियो थी, सब ओके था. ओके, आई एम गोना गो इन द कमेंट सेक्शन जो थोड़े से स्टार हुए में.
आवाज़ थोड़ी कम है, आवाज़ बढ़ा दें, बाकी सब सही है। इसमें रिलीजन से लेकर हिस्ट्री तक एंड करंट सिचुएशन तक सब है। ख़याम भाई को माइक दे दें, बाकी फिट है सब। ख़याम भाई के माइक का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, वो ख़याम भाई ने बिल्कुल लास्ट मोमेंट के ऊपर एक अच्छी जुगाड़ ढूँढ ली, वरना तो बहुत बड़ा मसला आने वाला था। उन्होंने खैर सेल फ़ोन इस्तेमाल करके उसको फ़िगर आउट कर लिया। रियली प्रोफेशनल प्रोडक्शन, लेट गुड ऑसम। आप ये रियलाइज़ करें, देखें कि 3 डिफरेंट लोकेशन पे लोग बैठे हुए थे। तीनों डिफरेंट लोकेशन के ऊपर खूबसूरत वीडियो, खूबसूरत ऑडियो, कमाल नहीं हो गया? इसके लिए हम ख़ास तारीफ़ करना चाहूँगा मैं जवाद भाई की, जो कि हमारे प्रोडक्शन लीड हैं इधर 189 मीडिया में, जिन्होंने आज इसको बड़े अच्छे से मैनेज किया। मैं जस्ट ऑल्सो वांट टू पुट इट आउट देयर, दिस इज़ नॉट अ बेंचमार्क। ये हमारे पास हमारे अपने करीबी गेस्ट्स थे, तो हमने वो थोड़ा मैनेज कर लिया। वी जस्ट वांटेड टू चेक आवर कैपेबिलिटी। बाय एंड लार्ज मोस्ट गेस्ट्स विल बी जॉइनिंग इन फ्रॉम देयर लैपटॉप्स। सो वो जो प्रोडक्शन क्वालिटी आपने आज देखी है, ये ना हो कि आप पूरी ज़िंदगी उसी को ही बना लें। Production was 10 out of 10. I don't know. I just found the topic super boring. Maybe I already know much about it. Warranted. That's fine. And to be very honest, these guests weren't experts in this area as well. तो थोड़ा सा हमने भी उनको hot seat पे डाल दिया हुआ था. So that was our bad on that as well. Oh, it was a remote podcast. Then it was superb. Nitesh Singhal, bhai, bilkul 100%. Like these were in 3 different locations, kilometers apart. Like ये 3 different internet connections इस्तेमाल हुए हैं, 3 different production set इस्तेमाल हुआ है, and all have been brought together using digital tools. So that's what we were testing essentially. कि ये सारा मुझे बस यही टेंशन थी कि दरमियान में साउंड अप एंड डाउन तो नहीं होगी, इंटरनेट वगैरह क्या सीन है। मैंने यहाँ पे तो आई हैव 100 Mbps कनेक्शन, तो वो जनरली 1080p बेहतरीन स्ट्रीम करता है। बट 3 वे का वी डिडंट नो कि लैग आएगा नहीं आएगा। अच्छा, थोड़ा सा कॉन्वर्जेशन को वो करते हैं, यू नो, विद इन द होल अभी जो बात डिस्कशन आज हमारी हुई है, व्हाट आर योर थॉट्स? लेट मी नो। मैं थोड़े से पुराने कमेंट्स देखता हूँ, और उस पे भी विल टॉक अबाउट दैट एज वेल। Muzamil bhai, do share the details of the deal between KSA, Jordan, Pakistan and Israel. Sir, Jordan ने जितना, as per my knowledge, जॉर्डन ने एक्चुअली इसराइल के साथ पीस डील बहुत अरसे पहले साइन कर ली हुई थी, एंड दे रिकॉग्नाइज्ड इसराइल आफ्टर द 1967 वॉर। इसराइल ने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, गोलान हाइट्स का एरिया था, जो कि जॉर्डन से टेक ओवर किया हुआ था, और उसकी वजह से एक बॉर्डर का उनका एक वो था, यू नो, फाइट थी एसेंशियली। तो 70s में जॉर्डन ने उनके साथ पीस डील करके उनको रिकग्नाइज कर लिया हुआ था और अपना एक डिफैक्टो बॉर्डर बना लिया हुआ था। So they had already recognized Israel. Saudi Arabia and Pakistan and a bunch of other countries, Muslim countries, still do not recognize Israel. और जो अभी रिसेंटली सुनने में आ रहा था, वो यही आ रहा था कि सऊदी अरब जो है वो एक पीस डील लेकर आ रही है विद अ 2-state solution. तो द आइडिया वाज कि जी वो सर्टेन कंसेशंस मांग रहे हैं फॉर द पैलेस्टीनियंस इन रिटर्न फॉर रिकग्निशन ऑफ Israel, जो कि विद सऊदी अरब recognizing them would have been followed by at least 5 to 6 other countries, including Pakistan. Details क्या थी उस peace deal की? We don't know much about it. What we do know is कि there was a comment by a certain former Saudi minister, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जी ये हमारी, उन्होंने वेरीफाई करके जी डील हो रही थी, बड़ी अच्छी डील थी, would have been great for both sides. ये जो कॉन्फ्लिक्ट नया आया है, this has completely derailed that process. और उसके ऊपर उन्होंने जो है ना वो काफ़ी एप्रीहेंशन का इजहार किया, बट उससे हमें थोड़ा सा ये आइडिया हो रहा था कि सऊदीज आर वेरी सीरियस इन गेटिंग some form of concession, more than what we had seen previously to the Palestinians. Up at this point in time, any deal is off the table. The public sentiment in the Muslim world does not allow for any deal to happen for the next few years. And what has happened with this particular incident, अगर हम इसको आइसोलेशन में भी लें, तो एक नई जनरेशन जो है, क्योंकि जो जेन जी बहुत ज़्यादा थी, उनको ऐसा पता नहीं था, वो बिल्कुल डीह्यूमनाइज हो चुके हुए थे, उनके लिए ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट डीह्यूमनाइज हो चुका हुआ था, और वो बस कहते थे यार जो भी है ख़त्म करें, आगे जाएं। And so I'm seeing a lot of young people now understanding the history of Palestine, the history of the entire region, how things have evolved. And वो एक certain, अगर मैं कहूँ कि पैलेस्टीनियन कॉज के अंदर एक नई जान मोस्ट सर्टनली इसमें डल गई है।
यार फिर ये हमला सैबोटाज करने के लिए नहीं था, फ्रूट फॉर थॉट। यार मैं ओके, आई विल गिव यू गाइस फॉर द सेक ऑफ सम नॉलेज थ्रू दिस content piece, I want to share a very interesting what you might call it thread. और ये thread एक I'm not sure if this is a Palestinian guy, is definitely an Arab. उन्होंने लिखा हुआ है और उन्होंने पूरा का पूरा उसमें एक्सप्लेन किया है कि एग्जैक्टली सारी साइट्स किधर खड़ी हुई हैं और इस सिचुएशन में हो क्या रहा है। मुझे पर्सनली आई फाउंड इट टू बी द मोस्ट इंसाइटफुल इन टर्म्स ऑफ, अगर आप ऑब्जेक्टिवली समझना चाह रहे हैं कि जियोपॉलिटिकली स्पीकिंग व्हाट्स गोइंग ऑन आउट देयर। लेट मी जस्ट क्विकली शेयर माय स्क्रीन and I would like to read this one out because it actually is a very very जैसे कहते हैं मेरे हिसाब से अ न्यूट्रल एनालिसिस। इयाद अल बगदादी साहब कहते हैं, मैं थोड़ा सा देख लूँ ये ओरिजिनली किधर से हैं। ही इज़ फ्रॉम पैलेस्टाइन एंड इज़ बेस्ड आउट ऑफ स्वीडन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आइदर डेनमार्क और स्वीडन, आई एम नॉट श्योर ये फ्लैग कहाँ का है। सॉरी, नॉर्वे उन्होंने लिखा हुआ है, ऑस्लो नॉर्वे, दैट वाज माय बैड। Here's a thread outlining the geopolitical situation around Israel-Gaza war, its possibilities, impossibilities, and possible outcomes. Heads up, it's my longest thread yet. It's also raw, unedited, and unevenly paced. Sorry, none of us are well, but at least we're trying. Just want to see कि ये सही आपको नजर आ रहा है या नहीं आ रहा। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। And note that this thread rhetorically departs from my usual tone because it's about geopolitics. I'm analyzing the actions of many actors, the majority of whom are awful. I'm trying to do that from a position of objectivity, which is hard when you actually value all human life. Again, बड़ा important है ये understand करना कि ये objective analysis होगा. We are very used to listening to a lot of emotional, rhetoric about incidents like these. Which is fine, but ये थोड़ा सा आपको objectively इसको सुनना होगा, just trying to understand a wider perspective of वहाँ पर क्या हो रहा है और potentially किस तरह से situation evolve कर सकती है। Hamas's stated objectives for this October 7th operation were release Palestinians in Israeli prisons, stop normalization pact between Israel and Saudi, punish Israel for violations/attacks on Palestinian holy sites. There was a fourth objective I can't find right now. अच्छा, ये obviously ये जो उन्होंने निकाला है ये हमास की स्टेटमेंट से वो निकाल रहे हैं, और ये जो कॉन्टेक्स्ट है, पनिश इजराइल फॉर वायलेशन अटैक्स ऑन पैलेस्टीनियन होली साइट्स, दिस इज बेसिकली इजराइल ने रिसेंटली अलग सा मॉस्क के ऊपर अटैक्स कुछ बढ़ाना शुरू कर दिए हुए थे और वो कंटिन्यूअसली वहाँ पर लोगों को हरास कर रहे थे, जिसकी वजह से अगेन ये थोड़े से पहले फॉर अ लॉट ऑफ पीपल आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान, पर्टिकुलरली द इंडियन फ्रेंड्स हु आर वाचिंग मी राइट नाउ, they wouldn't know context because उनको before this particular October 7th incident उनको ऐसा कुछ खबर नहीं आ रही होगी, बट हमें पाकिस्तान में बहुत रेगुलरली इसकी वीडियोस और इमेजेस आती रही हैं जिसको हम देख रहे थे, एंड सो इसका ही ये हवाला दे रहे हैं कि जो वो अटैक्स हो रहे थे उसका ये एक रिएक्शन था। Most coverage of Hamas's attacks in Western media have focused on the atrocity factor, the mass killings and kidnappings of civilians. Virtually none have actually covered it from a military strategy standpoint, but it's important to look at that to get a full picture. Hamas's attack was very well coordinated and meticulously planned. They first used drones to take down surveillance systems on the border fence, rendering them blind, then moved bulldozers to knock down sections of the fence. Other fighters used tunnels, others used paragliders. Israel had relied upon high-tech surveillance, including tunnel detection systems, for the security of the Gaza border force. Hamas seems to have dug deeper than these systems can detect. The tunnels they dig across the border seem to be one use only and abandoned afterwards. Their first targets were intelligence posts, police stations, and IDF points. They knew exactly where to hit and how long it will take them to encounter a response. Their fighters were able to operate within enemy territory for over 24 hours, meaning they were well supplied. Why is this important? Because we want to understand what Hamas was expecting as an Israeli response. Was it expecting or planning on a ground invasion, or did they think this will be a kidnap operation that will be followed by bombing and then negotiations and a prisoner swap? Just wanted to ask you guys, are you following me? Confusion तो नहीं हो रही यहाँ पर थोड़ी सी? अच्छा जी,
There are indications and early statements suggesting that Hamas's attack was more successful than they had expected. In one statement I came across, the army collapsed as we attacked. What could we do in this situation? We just pressed forward as far as we could. Other statements suggest that the Vanton massacres and atrocities that followed as being the result of them running out of targets and trying to just gain as many hostages as possible. Basically, a coordinated military operation descended into an unimaginably bloody massacre. But even if we assume Hamas planned this as a complex hostage-taking operation, I find it hard to believe that they did not anticipate a ground assault in response. Whoever planned an attack this sophisticated couldn't have not planned for an unprecedented Israeli response. अब वो ये कह रहे हैं कि जी ऑब्वियसली बात है कि अगर इनको ये इन्होंने प्लान किया था पूरा पूरा अटैक तो ऑटोमेटिकली एक बेसिक लॉजिक डिक्टेट्स कि उन्होंने कोई स्ट्रैटेजी बनाई होगी कि भाई रिस्पॉन्स तो आएगा और रिस्पॉन्स ऑब्वियसली बहुत सीरियस होगा बिकॉज अनप्रेसिडेंटेड स्केल है इस अटैक का जो कि पहले कभी भी नहीं हुआ पैलेस्टीनियन साइड से. अच्छा जी, in the early days after October 7th, there were messages originating on Telegram channels copied into group WhatsApp channels, etc., that say that Hamas has 8 months of supplies and that in addition to their homemade weapons, they also have Iranian, North Korean, etc. weapons. About the tunnel network, some say it runs 500 kilometers in total. For comparison, Oslo's metro is 85 kilometers and a lot of it is overground. It's multi-layered and was built over many years. Also, there's thousands of tunnels across the Egyptian border, plus temporary tunnels into Israel. So did Hamas at least anticipate, if not actually plan, on a ground invasion? I think they did. Now for question 2, did Hamas coordinate this with its allies, Hezbollah and the Iranian regime? I also think they did. So वो ये कह रहे हैं कि जी उन्होंने ये एक्सपेक्ट किया था जब ये अटैक होगा कि उसके फॉलो अप में एक ग्राउंड इन्वेजन होगी और जो इजरायली रिस्पॉन्स होगा जिस तरह से हमने देखा है प्रॉब्ली it is much more disproportionately higher than what a lot of the rest of the world was expecting, but they were most certainly expecting a response जो कि फिर हमने देखा. There are strong indications that Hezbollah at least knew, if not coordinated the attack. If we go by the report on this link, then Hamas's attack was a one-off hostage operation. It was part of a much broader strategy. ये खैर इसमें उन्होंने कुछ कोटेशन डाली हुई है कि वो हेजबोला के लीडर ने कुछ बताया था कि जी they are planning on something. Again, thread डाल दूंगा, you guys can check this out. If this is a coordinated broad plan and if the Hamas attack planned on an Israeli ground invasion, then it would make sense for Hezbollah to wait until Israel is bogged in Gaza before they open a major new front to Israel's north. And I'll come back to this, I'm thinking aloud. यानी कि वो ये कह रहे हैं कि जी अगर तो हेजबोला इसमें पार्टिसिपेंट है तो वो वेट करेंगे कि जब तक कि जैसे ही इजराइल की फोर्सेस ग्राउंड इन्वेजन करें उसके बाद हेजबोला जो है वो एक फ्रंट खोलेगा ऑन द नॉर्दर्न साइड ऑफ इजराइल. फॉर कॉन्टेक्स्ट मैं थोड़ा सा अगर मैप खोल के आपको दिखा भी सकूं, एक सेकेंड. So let me just quickly open that screen. So this is Israel, this is the Gaza Strip, और यहाँ पर लेबनान के अंदर हेजबोला ऑपरेट्स, राइट. सो ये एसेंशियली टू फ्रंट वॉर बनती है अगर हेजबोला यहाँ से अटैक करता है और गाजा से यहाँ से हमास अटैक कर रहा है. व्हाट ही सेइंग है कि जैसे ही यहाँ पर ग्राउंड इन्वेजन होती है, दैट मीन्स ट्रूप्स गो हियर, तो हेजबोला इफ दे आर कोऑर्डिनेटेड इन टर्म्स ऑफ देयर प्लानिंग दे विल पुश फ्रॉम हियर. particularly because हेजबोला ये छोटी जगह है, यहाँ पर आप एयर स्ट्राइक से काम चला सकते हैं, यहाँ पर आपको फुट सोल्जर्स चाहिए होते हैं. सो जैसे ही यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन आती है तो वहाँ से फुट सोल्जर्स परफॉर्म कर सकते हैं. अच्छा, आई गो बैक टू द अदर स्क्रीन. Okay, what I mean is that you see isn't wait. Okay, but let's look at Israel now. When discussing state actors and their decision making, there's a kind of hierarchy that serves me well. The most fundamental imperative are geopolitical, then the political, and then the ideological. Keep in mind when analyzing Netanyahu's response. वो ये कह रहे हैं कि जी किसी भी स्टेट के अंदर सर्टेन एक्टर्स होते हैं जो डिफाइन करते हैं कि वो स्टेट किस तरीके से रिएक्ट करेगी. ऑन टॉप ऑफ दैट हमेशा जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट्स होते हैं. उसके बाद
उसके बाद पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स होते हैं और उसके बाद आइडियोलॉजिकल इंटरेस्ट्स होते हैं। जो और इसको कॉन्टेक्स्ट में लाने के लिए जब हम इजराइल की बात करते हैं तो हम काफ़ी दफ़ा इसको एक रिलीजियस वो के देते हैं कि यार व्हाट, दिस इज़ अ ज्यूज वर्सेस मुस्लिम थिंग, या फिर हम पॉलिटिकल वो करते हैं कि नेतन्याहू जो है उसकी एक अनपॉपुलर गवर्नमेंट थी, ही नीडेड अ वॉर टू यूनाइट हिज पीपल एंड गेट री इलेक्टेड नेक्स्ट ईयर। और एक जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है जिसमें इजराइल की एक सुप्रीमेसी, या अगर इजराइल से हटके हम बाकी मिडल ईस्ट की देखें तो देयर इज अ जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ ईरान, सऊदी अरेबिया, टर्की एंड इजिप्ट एज वेल, जिसको ये आगे एक्सप्लेन करते हैं। बट व्हाट ही इज सेइंग इज कि एट द टॉप नंबर वन रीजनिंग हमेशा जियोपॉलिटिकल होती है, और उसके बाद फिर पॉलिटिकल होती है, और सबसे आखिर में आइडियोलॉजिकल होती है। बट यस, ऑल थ्री गो हैंड इन हैंड. What I mean is that what you see isn't just Israel acting on for its own security, its geopolitical imperatives, but also Netanyahu acting for his own political career. And there's also his electoral allies acting out their ideology. So all three are ये जो होता हुआ देख रहे हैं इसके पीछे डिफरेंट एक्टर्स हैं, और हर एक्टर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई जियोपॉलिटिकल रीजंस की वजह से कर रहा है, कोई पॉलिटिकल रीजंस की वजह से कर रहा है, कोई आइडियोलॉजिकल रीजंस की वजह से कर रहा है. The October 7th attacks are a huge repudiation of much of Netanyahu's career. It's almost like everything is built for decades crashed in a matter of hours. Netanyahu presented himself as a master statesman who can do the impossible for Israel. His project was to liquidate Palestinian National Project, normalize with Arab regimes to bring the land of peace, to break the land for peace paradigm. ये बेसिकली व्हाट ही मींस बाय दैट इज कि जी आप टू स्टेट सोल्यूशन लेकर आए, पैलेस्टीनियंस को लैंड दें और पीस मिल जाएगा. वो वाली पैराडाइम जो कि अमेरिका भी बड़े अरसे से कहता रहा है जी, टू स्टेट सोल्यूशन, पाकिस्तान भी टू स्टेट सोल्यूशन, मोस्ट ऑफ द यूएन में ये हमेशा बात टू स्टेट सोल्यूशंस की होती रही है. इजराइल उस चीज को चेंज करने की कोशिश कर रहा है कंसिस्टेंटली बाय मेकिंग श्योर के जो डायनामिक्स ऑफ द रीजन चेंज हो जाएं, कि पीपल स्टॉप थिंकिंग अबाउट द टू स्टेट सोल्यूशन, एक नई रियलिटी कंस्ट्रक्ट हो जाए. अच्छा, strengthen Hamas to weaken the Palestinian, annex the West Bank to make a two-state solution impossible, treat Palestinians as a security problem to be managed indefinitely. By the way, the point about Netanyahu's policy was to strengthen Hamas. A lot more can be said about this failure, but here's a good start. ये इसमें पूरी डिटेल बताई हुई है कि किस पॉइंट के ऊपर किस किस तरीके से उन्होंने हमास को पंप किया, उसको बिल्डअप किया, उसको सपोर्ट किया. और ये हारिट्स विच इज़ एन इजरायली न्यूज़पेपर, ये उसकी उन्होंने साइट की भी है. अगेन यू कैन चेक दिस आउट, ताकि आप लोग ये ना कहें कि यार ये तो रैंडम कंस्पिरेसी थियरी कोट एंड कोट बोल रहे हैं. दिस इज ऑल trackable and with the data given there as well. It was also under Netanyahu that Israel expanded its disinformation capacities and leaned hard into relying upon cyber capabilities and high-tech occupation. Also a reminder, Netanyahu is one of the first pioneers of the war on terror paradigm more here. उसमें उन्होंने फिर ये फर्दर साइट किया हुआ है कि वॉर ऑन टेरर का जो डॉक्ट्राइन है जो कि यूएस यूज कर रहा था, दैट दे यूज टू इन्वेड अफगानिस्तान. हालांकि एक भी अफगानी उनके सितंबर 9/11 अटैक्स में इन्वॉल्व नहीं था. टू इन्वेड इराक, हालांकि इराक में कोई वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं थी. टू इन्वेड लिबिया, हालांकि लिबिया में कोई फाशिस्ट रिजीम नहीं थी. इनफैक्ट इट वाज अ वेरी फंक्शनिंग सोसाइटी, द मोस्ट प्रॉस्परस इन अफ्रीका, लेकिन वो फिर इवेंचुअली कंप्लीटली तबाह हो गई. तो वो जो डॉक्ट्रिन आई वॉर ऑन टेरर वाली, दैट बेसिकली हिप्नोटाइज्ड द एंटायर वर्ल्ड, वो ओरिजिनली नेतन्याहू ने डिजाइन की थी इन इजराइल. अगेन देयर आर लॉट ऑफ डिटेल्स within this thread that you can check out. So after October 7th, Bibi had one of two options. Bibi काफी commonly नेतन्याहू को कहा जाता है जब मेन स्ट्रीम मीडिया वगैरह इसके बारे में बात करते हैं, had one of two options: resign and admit that this is the result of a series of failures, most of which lead back to him, or two, go all out and try to accomplish a victory his allies always wanted but couldn't do. Ethnically cleanse 2 million Palestinians. Again pause लूंगा, यहाँ पर वापस आऊँगा. थोड़ा सा आप कह रहे हैं जूम कर लें, मैं इसको जूम कर लेता हूँ. But other than that, are you guys following me and is it all good? क्योंकि मुझे है कि मैं ये पढ़ रहा हूँ और वो कर रहा हूँ, तो ये ना हो कि आप लोग एसएस भाई, इट सीम्स नेतन्याहू हायर्ड हमास टू डू दिस अटैक. देखिए आप बहुत जंप कर रहे हैं कि एक चीज ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर कर रहे हैं.
इसके बहुत सारे threads हैं. We don't know whether he hired them. What we do know that he has historically pumped them and supported them and tried to use them against the democratic Palestinian Authority, जो कि peaceful historically रही है. But ये थोड़ा सा देखें analysis और इस सारी चीज़ में there is a lot more nuance. Things do shift. तो इतना ज़्यादा jump ना करें. Is this something of China doing to keep USA occupied in Israel as they did in Ukraine? More fronts opening up. Palestine might lose the battle but win war as USA weakens. So Israel. Okay. We'll go back to the thread. थोड़ा सा मैं इसको zoom कर लेता हूँ for your benefit. I hope this is okay. अच्छा जी. So my analysis is that Israel's response so far reflects primarily not Israel's security imperative, but Netanyahu's political calculations. His first statement was, "We're going to change the Middle East," which, if you follow Netanyahu, you know is a very Netanyahu thing to say. Netanyahu even seems willing to sacrifice the hostages for that. He's not even meeting with the hostage families, and pro-Netanyahu mobs are calling hostage families traitors for calling for a ceasefire to allow for hostage negotiations before a ground invasion. Can you imagine that? Can you imagine a world जहां पर सारा narrative hostage पे बेचा जा रहा है और वो hostages को खुद protect करना is not their number one priority. Bombs गिरा के बच्चों को मारना is their number one priority. That is just absolutely mind-numbing. But nonetheless, I understand when people ask what else could he have done in response to such a brazen attack. इन्होंने फिर excite किया. Amidar and others have written good posts about this, but while such a response would have been good for Israel, it would have been bad for BB's career. Again, site हुआ हुआ है बहुत detail के अंदर. You guys can check it out. By the way, Israel will come out of this a much more polarized and right-wing country. You would expect people to rally to their leader and to unite versus a common threat after such horrors. But BB is placing his political career above everyone's security in Israel and regionally and globally. And so the Israeli, Netanyahu and company's response to a humiliating failure is to achieve the impossible and ethnically cleanse Gaza. I'll come back to the actual Gaza operation and the stated objective of destroying Hamas. But now let's look at Egypt and all of this. अब ये जो है ये इंटरेस्टिंग है. क्या कहते हैं उसे, क्योंकि ये वाइडर पर्सपेक्टिव आपको दिखाता है. बहुत सारे क्वेश्चंस जो हमारे दिमागों में भी आते हैं, हमें सुनने को भी मिलते हैं. According to multiple Israeli commentators and even think tanks, the Israeli demand is to transfer Gaza's population into the wilderness of the Sinai Desert. It's even clear that the US and perhaps other Western countries tried to pressure Egypt's Sisi into accepting this. By the way, Sinai Desert is completely uninhabitable. So ये याद रखिएगा कि ये कोई इतना मजाक नहीं चल रहा कि अफगानी लोग पाकिस्तान आ गए और पख्तूनख्वा में रह लिए जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है. ये आप एसेंशियली कह रहे हैं कि एक सेटल एरिया से लोगों को आप डेजर्ट में ढकेल दें और फिर फिगर आउट करें क्या करना है. दैट इज वन एस्पेक्ट. खैर वो मजीद और एक्सप्लेन करते हैं. Here's the thing. Egypt would never accept this as a matter of geopolitical imperative. If 2 million Palestinians are displaced into Sinai, it could be fatal to Sisi's regime. Not exaggerating when I say the regime could fall, and it won't even stop Hamas. Hamas already has 2,500 smuggling tunnels across the Gaza-Egypt borders, plus ties with smugglers in Sinai. If Sinai becomes the new Gaza, Hamas will just start to rebuild on the Egyptian side when they'd also have the advantage of a recruiting pool of millions of angry Egyptians. अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि जो नैरेटिव आपको बेचा जा रहा है वो ये बेचा जा रहा है कि यार मसला तो हमास है, हमें तो टेररिस्ट से प्रॉब्लम है. वाइल द सोल्यूशन सजेस्ट ये किया जा रहा है कि सारे पैलेस्टीनियंस को आप इजिप्ट में डाल दें. वो कह रहे हैं जी अगर आपकी बात हम मान लेते हैं कि हमास वाले जो हैं टेररिस्ट हैं वो एक सिक्योरिटी थ्रेट है आपके लिए और वो सिविलियन पॉपुलेशन में छुपे हुए हैं, तो वो तो सारे के सारे इजिप्ट चले जाएंगे. और हमें पता है कि इजिप्ट से उनके पास टनल्स एग्जिस्ट करते हैं. तो अगर आपका सिक्योरिटी का नैरेटिव है तो सिक्योरिटी तो नहीं आपकी इससे बचेगी. क्लियरली योर नैरेटिव वाज नेवर सिक्योरिटी टू बिगिन विद, देयर वाज अनदर प्लान ऑल टुगेदर. दूसरा वो ये कह रहे हैं कि जी इजिप्ट में वहां पर जब वो जाएंगे तो इजिप्ट में वो बहुत सारे और लोगों को, अभी तो वो इनक्लोज्ड हैं दोनों साइड से, तो दे हैव व्हाटएवर पॉपुलेशन दे हैव एंड दे हैव व्हाटएवर रिसोर्सेज दैट दे हैव, बट देयर दे विल बी आउट इन द ओपन एंड दे कैन रीग्रुप and continue this much more than what they're doing right now. So the entire security calculus that is being sold to us seems like
completely illogical at this point in time. Not to mention that Egypt was already getting screwed over with Biden's India, Middle East, Europe corridor that bypasses Egypt and devalues the heavy investment they've made in modernizing their own infrastructure. So they were getting screwed even before these events. जो बेसिकली पिछले दिनों हम डिस्कस भी कर रहे थे, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप वाली जो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर जो बन रहा था, क्योंकि इजिप्ट का ज्यादा धंधा चलता है थ्रू देयर कॉरिडोर. अगेन मैं थोड़ा सा इसको लेकर आऊंगा और अगर मैं आपको मैप में दिखा सकूं तो यू विल गेट सम बेटर कॉन्टेक्स्ट. ये देखें जी, ये जो है ना, इस वक्त ग्लोबल ट्रेड यहाँ से होती है, यहाँ से सारी की सारी जाती है, वो इधर से होती हुई यहाँ से इधर से रेड सी, और रेड सी से यहाँ से सुएज कनाल से यहाँ से ट्रैवल करती हुई पोर्ट साइड से यहाँ से निकलती है और फिर वो आगे यूरोप की तरफ चली जाती है. तो ये दिस इज़ वेरी लुक्रेटिव फॉर इजिप्ट. इसको उन्होंने रिसेंटली बहुत मैसिवली अपग्रेड भी किया है सो दैट ये एक्टिवली यहाँ से ट्रेड हो. यही वजह है क्योंकि ये एक यहाँ पे बॉटलनेक है और एक यहाँ पे बॉटलनेक है, जिसके बारे में आपने सुना होगा कि जिबूटी में एक चाइनीज नेवल पोर्ट बेसिकली पूरा बनाया गया है. वो भी इसी वजह से बिकॉज चाइना वांटेड टू प्रोटेक्ट. अगर आप देखें ना तो यहाँ पे एक और बॉटलनेक आ रहा है, ये पूरा बड़ा एरिया और इसमें यहाँ पे एक बॉटलनेक आता है जिसकी वजह से चाइना ने जिबूटी में अपना एक पोर्ट बनाया है. तो ये जो पॉलिटिकल रीजंस में ये चीज़ें बहुत सीरियस होती हैं. और जो ये नया प्लान इन्होंने अनाउंस किया था दैट वाज गोइंग टू बाईपास इजिप्ट, और वो ये कह रहा था कि जी बजाय इसके कि समंदर में यहाँ तक किश्तियाँ आए तो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे किश्तियाँ आएंगी, वो ट्रेन से यहाँ से होती हुई इजराइल से इधर एक पोर्ट सिटी से यहाँ से निकलेंगी और यहाँ पे ग्रीस में लैंड कर जाएंगी, कंप्लीटली बाईपासिंग इजिप्ट. अच्छा जी, बैक टू द थ्रेड. अच्छा जी, रिमाइंडर. अच्छा reminder that a significant part of the modern Egyptian national identity was forged in conflict with Israel. The current Egyptian regime itself was founded by army officers who overthrew the previous regime, the monarchy, after blaming it for the 1948 defeat versus Israel. ये भी याद रखिएगा कि जो लास्ट इजिप्ट में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर था मोहम्मद मोर्सी, हु केम आफ्टर अ लॉट ऑफ प्रोटेस्ट्स. उससे पहले देयर वाज होस्नी मुबारक, जिनको वो जो कि बहुत अरसे से वहाँ पर थे, उनको उन्होंने डीथ्रोन करके एक पॉपुलर प्रोटेस्ट जिसको अरब स्प्रिंग भी कहा जाता है, जो कि बहुत सारी अरब कंट्रीज में हुई थी, वो इजिप्ट में हुई और फिर वहाँ से एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड लीडर ऑफ द मुस्लिम ब्रदरहुड पार्टी मोहम्मद मोर्सी आए. 2 to 3 years into his rule, there was a regime change operation backed by the Americans and certain Middle Eastern countries, क्योंकि उनको ये डर था कि डेमोक्रेसी वाला वायरस फैल ना जाए. और फिर वो मोहम्मद मोर्सी साहब जो है उनको ओवरथ्रो किया गया. जनरल सीसी took over, who's still now ruling Egypt, and वो largely हमें ये समझ थी कि ये एक अमेरिकन बैक्ड कू है और भी एक कंसेशंस लेते रहे हैं अमेरिका से. बट मोर्सी साहब जब आए थे तो उनका एक नारा होता था जो उनकी बहुत मैसिव लाखों लोगों की प्रोटेस्ट्स होती थी, उसमें होता था बोरका मोर्सी आर गाजा, सपोर्ट मोर्सी फ्री गाजा. कैन यू इमेजिन कि हमारे पाकिस्तानी पॉलिटिकल सिस्टम में कभी हमने इस तरह के नारे नहीं सुने. सो कैन यू इमेजिन द इमोशंस ऑफ द इजिप्शियन पीपल एंड हाउ कनेक्टेड दे आर, एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड that up until 1967 Gaza was a part of Egypt, जो कि 1965-67 की वॉर में इजिप्ट ने बेसिकली गाजा को और सिनाई के एरिया को, जो कि पूरा डेजर्ट नीचे है, उसको टेक ओवर कर लिया था. एंड देन इजिप्ट इवेंचुअली डिड अ पीस डील विद इजराइल टू गेट द सिनाई रीजन बैक व्हाइल गिविंग देम गाजा. सो ये बैकग्राउंड है कि इजिप्ट में क्या इमोशंस हैं और क्या कनेक्शन है to this entire conflict. So even if their regime is, or at least was called Western backed, looking after Western interests, they do have to listen to their people, or public jo hai would not have taken kindly to Egypt not responding to the to this conflict
in the way that they want to. So not Sisi nor anyone else who wants to stay in power in Egypt would allow Gaza's population transfer into Egypt. I am not exaggerating when I say that Egypt would sooner break the Camp David Accords or even start covertly supplying Hamas with weapons that then accept such an outcome. वो ये कह रहे हैं कि जी इजिप्ट कैंप डेविड अकॉर्ड्स बड़े मशहूर हुए थे पीस के, वो भी तोड़ देगा, वो हमास को वेपन्स भी सप्लाई कर देगा, लेकिन वो ये नहीं एक्सेप्ट कर सकता कि 2 मिलियन पैलेस्टीनियंस वुड कम इनटू इनटू इजिप्ट राइट नाउ. और इसके वो जियोपॉलिटिकल वो बता रहे हैं रीजंस कि जी इजिप्शियन इकोनॉमी सर्वाइव नहीं कर सकती और इसी के साथ साथ इजिप्ट की जो गवर्नमेंट है उसको वो पोटेंशियली फॉल कर जाएगी. It is within this context that I read today's call between Egypt's Minister of Foreign Affairs and Iran's Minister of Foreign Affairs. Sisi is feeling the heat and is looking for other options. In case of an escalation, he wants to be in contact with all sides. I can't imagine he's been sleeping easy these days. Jordan too would never allow it. In Jordan, the fear is that if population transfer happens in Gaza, then the West Bank is next. West Bank, मैंने आपको पहले बताया, was part of Jordan. और उसकी बहुत सारी पॉपुलेशन ऑलरेडी जॉर्डन में हिस्टोरिकली पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज थे और फिर वो एक अपराइजिंग हुई थी कॉल्ड द ब्लैक सितंबर. आप जाके उसके बारे में भी पढ़ लीजिएगा. सो इजिप्ट का विद इन द पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज एक बहुत टर्बुलेंट पास्ट रह चुका है एंड दे आर नॉट गोइंग, सॉरी इजिप्ट कह रहा हूँ, जॉर्डन का, एंड दे आर नॉट वेरी विलिंग टू एक्सेप्ट. अगेन ये छोटी छोटी कंट्रीज, इनकी छोटी छोटी पॉपुलेशंस हैं, इसमें जब इतनी बड़ी पॉपुलेशन रेफ्यूजीज की आती है तो इनकी पूरी इकोनॉमी, इनकी पूरी डायनामिक तबाह हो जाती है. तो ये कह रहे हैं कि जी जॉर्डन भी इस किस्म की कोई चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेगा. Historical note, Jordan saw a 10-month civil war in the 1970s when Palestinian militants stationed themselves there to fight Israel. Egypt and Jordan have the longest lasting peace treaties with Israel. That even those are being tested tells you something. Biden adopting Bibi's position shows he'd rather coddle Bibi than appreciate Egypt and Jordan's vital national security concerns. Follow कर रहे हैं मुझे? थैंकफुली व्यू काउंट नहीं ड्रॉप हुआ. ये बहुत डिटेल्ड एनालिसिस है लेकिन ये बहुत ज़्यादा आपका दिमाग खोलेगा, तो मैं इस वजह से चाह रहा हूँ कि आप लोग जो है ना ये सुन लें. बट अगर आप बोर होना शुरू हो जाए, आपको समझ ना आए, तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर आके बता दीजिएगा. एनीवेज आई एम गोना कंटिन्यू. अच्छा जी, उसमें फिर उन्होंने फर्दर थ्रेट दिया, इट्स इनसेन that the US actually adopted the Israeli position and wanted Egypt to accept population transfer. This has far-reaching implications for how regional leaders will see the US going forward. You can get your allies do many things but not slit their own throats. Alliance means mutual interest and benefit. When you ask someone to slit their throat for you, the alliance is over. It means these countries no longer can trust the US to make their interests a priority. It also means they can start looking for an ally who would respect their interests. ये बहुत important statement है, क्योंकि a lot of times हम जब देख रहे होते हैं ना, हम कहते हैं ओ जी वो तो अमेरिकन पपेट है, ओ जी वो तो चाइनीज पपेट है. पपेट्स नहीं होते, इंटरेस्ट्स होते हैं डिफरेंट कंट्रीज के. और वो जब इंटरेस्ट अगर डिमिनिश होना शुरू हो जाए, और उन्होंने जिस तरह बोला कि कोई भी अलायंस के अंदर ना आपको कोई ना कोई इंटरेस्ट में आपको कुछ गिव और टेक की रिलेशनशिप होती है. व्हाट द अमेरिकन्स वांटेड इजिप्ट टू डू वाज एसेंशियली अकिन टू कटिंग देयर ओन थ्रोट, जिसमें नजर आया कि जी अमेरिकन्स आर नॉट इवन रियलाइजिंग द सिचुएशन दैट द इजिप्शियंस आर इन, and therefore it became abundantly clear that America cannot be trusted as an ally. And therefore जो उसने साइड किया कि जी Egypt calling the Minister of Foreign Affairs in Iran was very interesting, because now they're basically looking over at the other side if they can offer them a better opportunity. Basically, if he gets his way, the BB and company plan is to expel Gaza Palestinians into Egypt and probably later expel West Bank Palestinians into Jordan, so Israel can have all the land without any of the Palestinians, and so for Palestinians to no longer exist as a nation group. Also, I swear if I get another comment from a clueless person who seems to think Arab countries should accept refugees because refugees should be welcome, this isn't a humanitarian operation, you bleeping moron. This is ethnic cleansing and the liquidation of a nation. ये बड़ा important है, क्योंकि लोग कहते हैं जी पाकिस्तान ने किए थे, यूरोप कर रहा है. वो रेफ्यूजीज ये होते हैं कि यार आपके मुल्क के हालात खराब हैं, आप आ जाएं, रह लें, हालात बेहतर हो जाएंगे, आप वापस चले जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है. ये एथनिक क्लेंजिंग है. ये कहा जा रहा है कि जी ये बंदे जाएंगे और ये कभी वापस नहीं आएंगे और इनकी आइडेंटिटी भी छीन ली जाएगी. सो द टू आर इनकम्पेरेबल. आप उन दोनों को कंपेयर ही नहीं कर सकते. Okay, now let's talk about Saudi Arabia, which was in the process of negotiating a normalization deal with Israel, which included US security guarantees. Summary: Mohammed bin Salman is annoyed about this war spoiled one of his
main strategic aims but has no choice but to take a hard line on Israel. अच्छा, किसी ने थोड़ी देर पहले ये सवाल पूछा था कि जी what is the Saudi situation in all of this, तो यहाँ पर अब वो उस चीज़ को एक्सप्लेन करने लगे हैं. वो ये कह रहे हैं कि जी वो एक बहुत अच्छी डील आ रही थी जिसकी वजह से रीजन को बहुत फ़ायदा होना था, और वो मोहम्मद बिन सलमान के लिए पर्सनली जियोपॉलिटिकली एंड पॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन वो अब डील ख़त्म हो गई है क्योंकि जो आपका पब्लिक सेंटिमेंट है उसमें उनको अब एंटी इजराइल या हार्ड लाइन स्टांस ऑन इजराइल लेना ही पड़ेगा. Mohammed bin Salman has a project and it's to secure the Saudi regime's future. He wanted Israeli tech and investments in his pet project in Neom. He wanted US security guarantees. He wanted the prestige of being a hero for making peace in the Middle East, etc. And he knows how to play hardball. For over a year before the war, MBS dangled public Israel normalization before both Bibi and Biden to get a long list of concessions, and he kept asking for more. But he's aware that his people can't stand by with Gaza being slaughtered. He has no choice but to take a hard line. Because MBS has a project, he doesn't want war. ये बड़ा important है कि ये सारी चीजें ना जो आप एनालिसिस कर रहे होते हैं कि अच्छा सऊदीज ने तो नहीं करवाया, इसने तो नहीं करवाया, उसने तो नहीं करवाया. MBS does not want war because MBS का एक बहुत massive economic and infrastructure plan चल रहा है विजन 2030, जिसके अंदर नियोम में काम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, और अगर यहाँ पे रीजन में वॉर होगी तो सऊदी अरब एटलीस्ट 30-40 ईयर्स पीछे चला जाएगा और जो सारी इन्वेस्टमेंट हुई है वो पोटेंशियली तबाह हो सकती है. सो दे डू इट इज नॉट इन देयर इंटरेस्ट टू हैव अ वॉर. ही रियली डजंट वांट वॉर. The Iranian regime knows this, of course, and for years had presented a simple formula. If they go to war versus Israel and USA, they'll consider US-Israel's Gulf allies to be targeted as well. In 2019, when there was an escalation with Iran, MBS immediately de-escalated and engaged with them. Now again, and shortly after October 7th, MBS called Iranian President Raisi, first time ever. Can you imagine this? How important this phone call was? And shortly after, Iran's foreign minister visited Saudi. Basically, hey, if this escalates, I'm not a part of this. So Saudis essentially are trying to tell the Iranians who are on the other side कि यार अगर तो ये escalate होता है तो भाई ये पागल हो गए और ये पागलों वाली हरकतें कर रहे हैं, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है. तो अगर आपने किसी किस्म का कुछ करना है तो आप इसी पे फोकस करें, हमारी तरफ मत आइएगा. So it's not only that MBS thinks his people, including his own family, won't tolerate witnessing the massacre, ethnic cleansing of 2 million people nearby. He also has to send a clear signal to the Iranians that he's not on the Israeli side in this. That said, MBS would be hoping that this dies down and he can get back to the Israel normalization project in due time. But he knows that if this escalates, it may be many years, if at all, that this can happen. He'll continue to engage Israel in private, probably already is. Weirdly enough, MBS now prefers Biden to Trump because Biden seems ready to entertain a US security guarantee that Trump won't. Biden's agenda is securing the US empire in the world. Trump's is securing white supremacy within America. Choose your poison. तो बेसिकली ये कह रहा है कि जी बाइडन कहता है कि अमेरिका चाहे चिल्लू भाड़ में, यूएस दुनिया की नंबर 1 कंट्री होनी चाहिए जिसके लिए वो पूरी दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट्स करेंगे और पार्टिसिपेट करेंगे, सिक्योरिटी गारंटीज देंगे, बेसिकली दुनिया के पुलिसमैन बन के बैठे रहेंगे. ट्रम्प ऑन द अदर हैंड कहता था कि दुनिया में जो भी चल रहा है आई डोंट रियली केयर, मुझे अमेरिका को बेहतर करना है और अमेरिका तो वाइट लोगों का था ओरिजिनली, तो मुझे वाइट सुप्रेमेसी कायम करनी है. अब वही वाली बात है, दोनों चीज़ों में आप, एक में रेसिज्म का प्रॉब्लम है विद इन अमेरिका, एक में ग्लोबल हेजेमनी एंड potentially genocide, attacks, violence, wars, millions and millions of people being displaced and or killed. उसका मसला है. तो वो कह रहे हैं जी choose your poison because इन दोनों में से आपने एक चूज करना है. And for MBS it seems like कि जो बाइडन की पोजीशन है वो उनके लिए ज़्यादा यूजफुल है. Back to the Iran axis, Iran has assets in Yemen, Iraq, Syria and Lebanon. The relationship between the Iranian regime and much of this militant network is complex. Calling them proxies reduces their agency. Calling them allies makes it seem like they're totally independent. वो proxies नहीं है क्योंकि वो proxy से ज़्यादा powerful है in terms of the support और ज़्यादा connected है. But calling them allies would mean कि वो जो है ना वो totally independent एक चीज़ काम कर रही है और वो allied है with another body. तो वो ये कह रहे हैं there's somewhere in the middle कि वो प्रॉक्सी इंडिविजुअली प्रॉक्सी नहीं है, उनकी थोड़ी इंडिपेंडेंट थॉट भी है बट हेविली सपोर्टेड बाय ईरान. एनीवे, आई डोंट थिंक Iran wants a regional war at this point. The question is whether in case of an escalation they'll go all in or whether they'll stand by and sacrifice Hamas. Some think they'll sit it out and allow Hamas to be destroyed. I think they won't, and here's why. अच्छा जी, बहुत सारे क्वेश्चन लोगों का वो आ रहा है कि जी अगर ग्राउंड इन्वेजन होती है, अगर मैसेकर होता हुआ या जेनोसाइड होता हुआ हमें नजर आया,
तो क्या मुस्लिम वर्ल्ड खामोश रहेगा? ये थ्रेड बहुत सारे उन चीज़ों के जवाब देता है, particularly in the context of the immediate neighbors within Iran, Syria, Egypt and Saudi Arabia. और उसमें फिर ईरान को मद्देनजर रखते हुए वो कहते हैं जी, by the way, Iran's proxies network isn't just about ideology but geopolitics. Look at this map of the Sassanid Empire, 6th century AD. Note how the Persia at the time extended its influence into the Levant and the Gulf and also Yemen. It just makes geopolitical sense on this chessboard. वो कह रहे हैं कि जी ये 6th century AD में भी जो पर्शियन एम्पायर था उन्होंने अपने आप को इस पूरे एरिया में रखा हुआ था. तो बेसिकली इनके लिए ना जियोपॉलिटिकल रिक्वायरमेंट है कि इन जगहों के ऊपर अपनी सुप्रीमेसी कायम रखना, बिकॉज इससे वो प्रोटेक्टेड रहते हैं फ्रॉम, माय अंडरस्टैंडिंग इज फ्रॉम द आर्मीज दैट आर होपिंग टू इन्वेड फ्रॉम द वेस्ट. If Iran sacrifices Hamas, it will lose a critical asset, suffer a serious ideological and political setback, send a signal to its other proxies that it doesn't stand by its allies. The third point is critical and other analysts haven't considered it fully. Iran's network is built over decades and based on long-term partnerships. The regime really stands by its allies. Look at Bashar al-Assad in Syria. They don't waffle like this. To allow one of its allies to be destroyed while it stands by will really damage its network. A similar calculus applies to Hezbollah. If Hamas is gone and Israel no longer has a military threat to its south, then it can then focus all of its efforts on the enemy of the north. Hezbollah cannot allow Hamas to fall because it'll be next. By the way, Iran's assets have already been activated. Houthis fired missiles and drones towards Israel that US Navy intercepted. US assets in Iraq and Syria were also targeted. US still has a lot of assets in the region. Iran's MO is to attack using proxies. The Houthi missiles drones were really a shock. Yemen is 1,700 kilometers away from Israel. The fact that they have missiles and drones of this range is astounding. But it's also likely the Houthi attack isn't meant to actually threaten Israel, but to tie up US Navy assets in the Red Sea. Red Sea आपने देखा था towards Egypt and Israel के दरमियान. वो ये चाह रहे हैं कि वहाँ पर, क्योंकि अगर वो वहाँ पे US naval assets रहते हैं तो वो ईरान की साइड पे नहीं जाते. But there's another side to Iran's calculus opportunity. If this becomes a major war, it would be a chance to use the chaos to attack US presence across the region. At best, keep the US distracted among multiple fronts. At best, force US withdrawal that would be hard to reverse. This is amplified by the fact that unlike other US wars in the Middle East, this isn't coming after significant pre and in line with overriding strategy. यानी कि ये बहुत प्री प्लानिंग से नहीं आई और कोई ओवर आर्चिंग स्ट्रैटेजी नहीं थी. ये रिएक्शन हो रहा है इस टाइम पे यूएस स्टेट का in this particular war. For years, US geopolitical thinkers have focused on the China threat. Nobody seriously has said, let's get involved in another war in the Middle East. So in this particular case, the US is caught flat-footed. It hasn't prepared for this. It's not in line with its long-term geopolitical aims. It's just reacting. And from everything we've seen so far, there's a lot of incompetence in their response. Even the messaging is confused. What about the IRGC, Iran's real army? They won't get directly involved unless the US gets significantly involved. Keep in mind, the US moved assets to deter non-state actors from exploiting the situation. I don't know if that means the US would act directly versus Hezbollah. Is US prepared to get directly involved alongside Israel, put boots on the ground, attack Hezbollah's positions? Bibi clearly wants the US to be involved directly, but some even suggesting that the IDF can't win this on its own. Some of Biden's messaging too can be interpreted this way. यानी कि वो ये कह रहे हैं कि जी यूएस पर्सनली चाह नहीं रहा कि वो ज़्यादा इन्वॉल्व हो. इजराइल एक्टिवली उनको पुश कर रहा है कि आप भी आएं क्योंकि हम अकेले तो नहीं कर सकते. If the IRGC acts, its likely target would be to block off the Strait of Hormuz, where 30% of world energy passes. Send oil prices skyrocketing, hurt the West in its pockets. They'll do it cheaply too, using drones, mines, etc. They won't even claim responsibility. China sent Navy assets to the region. It's extremely sensitive to oil shocks, and its main interest in preventing escalation is to ensure the oil flows. It's also a friend of Iran. Perhaps it'll want to make sure shipments headed to itself can still pass. There's also a non-zero chance that if this escalates to a significant degree and drags in the US, China will see this as a golden opportunity to move on Taiwan. But let's not even go there. This is already apocalyptic without another major war in the world. But non-zero chance. मतलब वो ये कह रहा है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा चांस है, but definitely non-zero chance है. ये नहीं कोई कह सकता कि नहीं, there is definitely
like it's definitive कि चाइना ताइवान पे नहीं करेगा. अगर बहुत ज़्यादा अमेरिका बॉक डाउन हुआ है मिडल ईस्ट वॉर में और बहुत ज़्यादा वो फाइनेंशियली एंड मिलिटरीली जो है वो ड्रेन हो रहे हैं, तो देयर इज अ वेरी हाई चांस, नॉट अ वेरी हाई चांस, देयर इज अ चांस, some percentage of chance that China will use that distraction to take over Taiwan as well. Here's the thing about an oil shock. Russia will benefit twice, hurts West, more profit on oil sales. But you know who else greatly profits from oil shocks? Mohammed bin Salman. Recall he was a pariah pre-Ukraine war. After the Ukraine war, he was the darling to the West again. Back to Gaza. अच्छा ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है. अगर आप ये फॉलो कर रहे हैं तो वो ये कह रहा है कि जी अगर ईरान एक्ट करता है जिस तरह इन्होंने कहा है कि ईरान एक्ट कर सकता है पोटेंशियली, तो उसमें सऊदी सपोर्ट पोटेंशियली उनको हासिल होगी. दिस इज फेयरली इंटरेस्टिंग. Back to Gaza. Some have blind faith that the IDF will absolutely win and eliminate Hamas. I don't share that view. Bibi painted himself into a corner with destroy Hamas as objective. He clearly doesn't have a well thought out plan. अच्छा जी, थोड़ा सा मैं वापस आता हूँ जी. ठीक है, 80 से ज़्यादा लोग अभी तक देख रहे हैं, इसका मतलब है लोग बोर होके नहीं गए हैं. एक दफ़ा फिर से क्विकली पूछ लूँगा कि जी आप लोग फॉलो कर रहे हैं, सुन रहे हैं? यस कर दें, डॉट भेज दें, कुछ भी भेज दें ताकि मुझे पता लग जाए कि यू गाइस आर एक्चुअली लिसनिंग एंड स्टिल एट इट. बी वेरी ऑनेस्ट. हेलो, आवाज़ आ रही है? I'm sorry this is long, but it's very insightful. People are constantly asking क्या है, क्या नहीं है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा. This really answers in an objective way कि हो क्या रहा है. So you know, I think it's very important to understand. Back to Gaza. Some have अच्छा ये बात हो गई. ये इसने फिर एक थ्रेड डाला हुआ है, मैं थ्रेड पढ़ देता हूँ, साइड पे खुला है. Israel has not won a land war since 1967, and even then it relied on a preemptive strike. It is quite experienced in military occupation and dropping bombs from the sky on civilians, but fighting face-to-face or urban combat and guerrilla warfare is something it fears. This is true. Many seem to have blind faith in Israel's military dominance, but the IDF hasn't operated in a real urban warfare situation for a generation. Its army is not well trained for the Battle of Gaza. And isn't prepared for the mass casualties they'll see during it. And this isn't just me saying it. Here's an article from Israel Today giving the full assessment of a retired IDF general. We have lost the ability to field an effective army and have become one-dimensional aerial power that can't win a war on its own. Today's IDF is effective at sniping unarmed journalists, raiding undefended Palestinian towns, and helping extremist settlers harass and beat up Palestinian farmers. But fighting a war in a potential urban meat grinder, I don't think so. Acha, to really destroy Hamas, he'll have to wage a bloody, prolonged urban war to dislodge a well-trained, highly motivated, well-supplied army that has spent over a decade digging in and preparing for such a day. The IDF has never fought such a battle. He'll have to take all of Gaza and hold it and either push out its inhabitants or fight among them. A partial invasion will only relocate Hamas, and occupation will make IDF a target for a prolonged and bloody attrition war. The deeper he gets into Gaza, the higher the risk of a second front war opening to his north, plus multiple fronts versus the US and a regional conflagration erupting. The regional escalatory potential will be almost infinite. मतलब वही कह रहा है कि वो जब गाजा में ग्राउंड इन्वेजन करेगा, वो जितना डीप जाएगा उतना ज़्यादा दूसरा जो फ्रंट है वो खोलने का रिस्क है फ्रॉम द हिजबुल्लाह साइड इन द नॉर्थ. और इसी के साथ साथ यूएस की जो एसेट्स हैं अक्रॉस द मिडल ईस्ट, उनके ऊपर पोटेंशियली अटैक्स बढ़ेंगे. और जो रीजनल एक पोटेंशियल वॉर है वो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे और देयर ऑलमोस्ट क्लोज टू इन्फिनिट. Also, the deeper he gets into Gaza and the more desperate the situation gets for civilians there, the more likely it is that even his long-term partners, Egypt and Jordan, will turn on him, despite their hatred for Hamas, because they can't afford not to. And even if he actually wins, all he'd have done is relocated Palestinian militancy from a besieged and blockaded Gaza to a slightly further, but much deeper and suddenly much less stable Egypt. अगेन ये सिक्योरिटी पैराडाइम है कि इससे ₹1.5 का कोई फर्क नहीं पड़ रहा अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि उसको कोई पॉलिटिकल या ईगो विक्ट्री मिल रही है. इजराइलीज को इन सबको कोई फर्क नहीं पड़ा. Right now in Israel, a major shitstorm has erupted between Bibi and the IDF. He wants them to take the blame for October 7th. IDF also suspicious of the military aims he set up and think, अच्छा ये IDF is Israeli Defense Minister?
Israeli Defense Forces. What does he mean by IDF? Israel Defense Forces. Acha. Okay. He wants them to take the blame for October 7th. IDF also suspicious of the military aims he set up and thinks some are unrealistic. Meanwhile, the hostage families who want to see negotiations are being ignored. यानी कि वो ये कह रहा है कि there is a fighting between IDF जो फौज है और बीबी जो कि politician है जो कि उनको एक war की तरफ धकेल रहा है. The most likely outcome is he'll go in as far as he can, but as the risks rise and for everyone, he'll have to stop, declare victory and pull out. The report card will be Israel isn't safer. Relationships with long-term partners, Egypt and Jordan, permanently damaged. Report card continued. Impossible for Saudi to normalize for a while. Real damage to US standing in the region. Hamas can claim victory because it wasn't destroyed. In the words of Noam, many Israelis and their future and security are also captives of Netanyahu. De-escalation is in everyone's benefit except Netanyahu. About Biden, he has his own domestic political calculus. He's coddling Bibi. They don't get along. He revealed his cards to Iran by making it clear he doesn't want escalation. His whole diplomacy amounts to ensuring Israel can attack Hamas without a spillover happening. Anyway, this is a very, very long thread, and I'm tired and thirsty, so I'll stop here. Yeah, this holds true for him. This holds true for me as well. But anyways, ये मुझे पर्सनली आई फाउंड दैट टू बी अ फेयरली ऑब्जेक्टिव एनालिसिस. जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में हमें ज़्यादातर जो सुनने को मिल रहा है ना, आपको जो अगर कोई यूट्यूबर बता रहा है या कोई अगर कोई आपके व्यूज कैप्चर करने के लिए बताया जा रहा है कि मुसलमान एंड मुस्लिम उम्मा एंड दिस एंड दैट, तो नेशन स्टेट्स होती हैं, जियोपॉलिटिकल रीजनिंग होती है. यस, आइडियोलॉजी आती है एट सम पॉइंट, बट उस कैलकुलस में आइडियोलॉजी नंबर 3 पे आती है. नंबर 1 के ऊपर एवरी कंट्री इज गोइंग टू लुक आउट फॉर इटसेल्फ जियोपॉलिटिकली स्पीकिंग. देन एवरी कंट्रीज जो लीडर इन क्वेश्चन जो करंटली इस वक्त है वो पॉलिटिकली देखेगा कि उसकी क्या स्टैंडिंग है और किस चीज से उसको सबसे ज्यादा फायदा है, और फिर उसके बाद आइडियोलॉजी विल प्ले. सो इस केस में वी आर एबल टू अंडरस्टैंड ईरान कहाँ खड़ा है, सऊदी कहाँ खड़ा है, इजिप्ट कहाँ खड़ा है, और लास्टली जॉर्डन कहाँ खड़ा है, जो कि डायरेक्ट इमीडिएट नेबर्स हैं टू इजराइल. लेबनान ऑब्वियसली आल्सो देयर. लेबनान की एज अ स्टेट उन्होंने ज्यादा नहीं बताया बिकॉज लेबनान हैज बीन breaking down in terms of as a state, as an economy. तो वहाँ पे largely जो calculus में operate कर रहा है वो Hezbollah ही है, and so he did explain that in detail. But anyways, yes, we understand, but you can provide a short summary? यार short summary इसकी unfortunately है नहीं ना. Situation is more nuanced. मैं कोई भी short summary दूंगा तो वो it can be taken in as one way or the other, and then it can be misconstrued. तो इस वजह से जनरली शॉर्टेस्ट समरी है कि मोस्ट लाइकली दिस वॉर विल द ग्राउंड ऑपरेशन विल स्टार्ट. दे विल गो इन, दे विल डू दिस ऑन दैट एंड दे विल कम बैक, एंड एक्चुअली कुछ नहीं हुआ होगा. दे विल फाइंड सम सॉर्ट ऑफ ए पॉलिटिकल विक्ट्री जो कि इजराइल उसको क्लेम करेगा कि देखो जी हमने टेररिस्ट को एलिमिनेट कर दिया, हालांकि उन्होंने टेररिस्ट को एलिमिनेट कोट एंड कोट टेररिस्ट को एलिमिनेट नहीं किया होगा. हमास उसको विक्ट्री डिक्लेयर करेगा, वो कहेगा जी उन्होंने कहा था हमें खत्म कर देंगे, हमें खत्म नहीं कर सके, अब हम ज्यादा बड़े तरीके से आएंगे. और जो हमारे इनिशियल एम्स थे जिसमें हमने कहा था कि जी सऊदी इजरायली ताल्लुकात जो है नॉर्मलाइजेशन ना हो, पैलेस्टीनियन कॉज जो है वो नई जनरेशन को पता लग जाए, और उन्होंने 2-3 एम्स किए थे वो लार्जली उन्होंने पूरे कर लिए. सो अगर मैं वैसे देखूं ऑब्जेक्टिवली तो अगर ये होता है तो हमास की विक्ट्री होगी इन देयर ओन मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स. बट इन टर्म्स ऑफ के पोटेंशियली क्या आउटकम नजर आता है, बिकॉज रीजन एट लार्ज डज नॉट वांट वॉर, तो इट डजंट सीम लाइक कि ये स्पिल ओवर होगा. Having said that, obviously we have hawks everywhere within Israel, within the US as well, within actually the combined West. The way कि एक one after the other European Union leader is now flying into Israel and showing their support. It reminds you eerily of the Iraq war, जब पूरा NATO ने आके जी एक पूरे मुल्क को literally तबाह किया और मिलियंस ऑफ लोग मारे और डिस्प्लेस किए, और पूरा यूरोप और पूरा अमेरिका जो था वो साथ था, और उसके 8 साल बाद कहा कि ओह सॉरी यार वो तो गलत इंटेल थी, और उसमें सारा उनका गोल्ड उठा के ले गए, और उसमें उनके ऑयल वेल्स में आज तक बैठे हुए हैं और वो आज तक उस ऑयल को स्मगल करके लेकर जा रहे हैं. तो वो वाला थोड़ा फील्स हमें नजर आ रही हैं इसमें भी, जिसकी वजह से मुझे डर उन्होंने बोला नॉन जीरो चांस,
तो एक नॉन जीरो चांस है कि दिस इज गोइंग टू स्पिल ओवर एंड बिकम अ वाइडर कॉन्फ्लिक्ट. लेकिन उसमें भी उन्होंने एक्सप्लेन किया कि इफ इट डज बिकम अ वाइडर कॉन्फ्लिक्ट, तो the sides that the different nations will take is now abundantly clear. And I'm quite certain कि वेस्ट को ये चीज अब अंडरस्टैंड हो गई है, which is why Joe Biden in the first 4 or 5 days of the conflict was like, Israel has a right to defend itself. After a week, the tweets had changed and it had become, Israel and Palestine need peace. Palestinians are not Hamas. Majority of Palestinians are not Hamas. There is a requirement for humanitarian aid, and Israel and Palestine need a two-state solution. So वो जो चेंज इन रेटरिक है, जो क्योंकि हमारा आज का टॉपिक भी ये था कि जी क्या फायदा होता है, क्या फायदा नहीं होता, वो चेंज इन रेटरिक इस बार इस वजह से आया बिकॉज देयर वर प्रोटेस्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. देयर वाज वेरी क्लियर एग्रेशन. जिस एग्रेशन ने आपके, वो कहा जाता है ना कि जी मैं जब बोल रहा हूँ तो मैं तो अपने लोगों को बोल रहा हूँ, लेकिन जब आपके लोगों को अंडरस्टैंडिंग होती है और फिर वो एग्रेशन आता है तो प्रोटेस्ट होती है तो आपकी हुकूमत वक्त को प्रेशर किया जाता है, और हुकूमत वक्त अपने पॉलिटिकल कैलकुलस में अपनी स्टांस को बदलती है. So in a way it is democratic in a wider sort of regional geopolitical sense. और वो चीज at play आई जिसमें हमने देखा कि populations pushed the Egyptian leadership, populations pushed the Saudi leadership, and as these leaders tried to create potential alternatives vis-a-vis the phone calls to the Irani foreign minister, it was abundantly clear, I believe, to the Americans particularly, कि the region is not having another Iraq moment. अब वो उस पे आगे लेकर जाते हैं, that is to be seen, but that is what it seems to be brewing at this point in time in the Middle East. मैं इससे ज़्यादा मजीद इसके ऊपर कमेंट नहीं करूँगा. Again, I don't know much about it internally. के इंडिविजुअल एरियाज के अंदर आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि लॉन्ग टर्म इसके रेपरकशंस क्या हैं. ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इटसेल्फ मेरे बड़े क्लियर ओपिनियंस हैं कि दिस इज ए जेनोसाइड थ्रू एंड थ्रू आउट. दिस डिड नॉट स्टार्ट ऑन द 7th of October. This has been happening for the last 75 years, and Palestinians definitely have the right to their land and to their freedom. So I will end this with a nara of Free Palestine, and thank you for joining me today. ये हमारा पहला टेस्ट था of the debate night, just to see the technical side of things, how they can potentially work. I also wanted to check in terms of me as a host, as a moderator, how can I perform? Actually होता क्या है, लोग किस तरह बोल रहे होते हैं. So वो चीज़ भी थी. If you do have any feedback or any thoughts, you can send me an email. Last time भी लोगों ने की थी, मैंने अभी तक उसका रिप्लाई नहीं किया, but I promised I will respond to everyone, क्योंकि emails is just easier to respond to. So you can send me an email over here. But anyways, 2 hours did not plan it this way, but आज 2 hours हो गया. I want to end this before the 2-hour mark happens. So this was SMHZ Betak debate night on Wednesdays. Today was the 25th of October 2023. Thank you so much for watching. Announcement: Friday I'm traveling to Lahore, so I will not be able to do a live. I will do it. The Friday's Gham Hour will be on Saturday night. So I will, inshallah, see you guys then. Thank you so much for tuning in. Shaba khair and Allah Hafiz.